जी नमस्कार शुभ सकाळ बंध्योत्कल जननी आपण समस्तଙ୍କର ଏଠି आगमन ପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଆମ ଗହନରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟରେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ମଞ୍ଚର ଶୋଭା ବିମଣ୍ଡିତ କରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ A warm good morning to one and all present over here. We are indebted and thankful for your gracious presence and valuable time. Our program's chief guest, Honorable CM of Odisha, Sri Mohan Charan Maji, would be joining us very soon. Ladies and gentlemen, thank you for your time and presence once again. Thank you for your cooperation. Thank you. ठीक है।
ଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୂଚନାର୍ଥେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିଟିଂସ୍ ଚାଲିଛି ସରିଗଲାଣି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ Our dignitaries would be gracing the stage in 10 minutes. Thank you for your patience. Round of meetings are going on with industrialists on various issues and, of course, the shared vision of Government of Odisha. Ladies and gentlemen, matter of 10 minutes and dignitaries would be gracing.
All right, so final round of meeting is over, and a very pleasant day for entire Odisha, Oriya people and beyond. Thank you to all the change makers, all the stalwarts, industry leaders from various industries, all the change makers. Thank you for your extra efforts, for which we are really, really proud of you. And thank you, Odisha को स्वावलंबी करिबारे आत्मनिर्भर ओडिशा गठन करिबारे समृद्ध ओडिशा 2036 अभिमुखे आमर जो लक्ष्य रही ताकू सफल करबा पई आपण समस्तकर भूमिका निहाती भाबरे प्रशंसनीय। आपण माने जे कठिन परिश्रम करिसंती आपणकर चिंताधारा रे हो आपणक सेट ऑफ एक्शंस रे हो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज रे हो जहां फल रे बहु संख्या रे नुआ कार्य संस्थान सृष्टि करी हेउछि। ओडिसार लोक माने आउ बाहरे रोजगार खोजु नाहांती निजर दक्षता निजर एजुकेशन निजर कौशल पई से माने ओडिसारे विभिन्न स्थान रे रोजगार पाई पारुछंती। सेते पई सारा सरकार को तरफ रु आपण समस्त को अशेष धन्यवाद। এই পরিপ্রেক্ষীরে এঠারে উপস্থিত সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি লিডর্স মানকু আমি হোল হার্টেড থ্যাঙ্কস জଣାଉଛୁ ধন্যবাদ ଜଣାଉଛୁ। ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। थैंक यू। ତେବେ ସେଇ ଶିଳ୍ପୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। आमे समस्ते मिसी साखी हेबा एक नूतन परिवर्तनर एक नूतन विकसित ओडिसार जो आपण माने प्रमुख प्रहरीर कार्य निश्चित भाव में तुलाइबे। All of you are aware that 27 projects foundation stones will be laid today, and you can see more than 25,000 crores of investment which will generate 52,000 plus employment in our state. So once again, congratulations to all of us. We would be definitely marking a new beginning today. This is totally a shared commitment from all leaders. Thank you so much. अल्प किछि मुहूर्तर अपेक्षा कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य वरेण्य अतिथि मानक सहित मंच उपरे योगदान करिवे तथा आनुष्ठानिक भावे आमे आज ऐतिहासिक गरिमामय अवसर को आगे नबा। आज आमे विभिन्न जिला सहित लाइव रे जोड़ी हेइछु जेउठी विभिन्न प्रकल्पर लोकार्पण करा जीव शिलान्यास स्थापन करा जीव वीसी माध्यम रे से माने आम सहित जोड़ी हेबे एवं आपण माने सेठे नुआ आरंभर झलक पाई परिबे। ता सहित डिफरेंट सेगमेंट रे आज वेरियस इंडस्ट्री लीडर्स मानक मंच उपरे सम्मानित करा जीव। सौभाग्यर कथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय निज कर कमल रे समान को सम्मानित करिवे। इंडस्ट्री लीडर्स मानक सहित उन्नयन कमिश्नर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव सम्माननीय श्रीमती अनुगत महोदय आम गहन योगदान कर सारे करताली स्वागत करने को अनुरोध करेंगे। आज ऐतिहासिक अवसर मंचर शोभा विमंडित करने को आम गहन उपस्थित हो सारी ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी महोदय जोरदार करताली स्वागत करबा। तांका सहित मंच रे अछंती माननीय शिल्प कौशल शिक्षा दक्षता विकास मंत्री श्रीजुक्त संपत चंद्र स्वाई महोदय, मुख्य सचिव ओडिशा सरकार श्री मनोज आहूजा महोदय एवं डीसी कमेसीएस श्रीमती अनुगर्ग महोदय आम सहित उपस्थित अछंती। तांको सहित मंच रे इंडस्ट्री लीडर्स माने अछंती जोरदार करताली देवा स्वागत करबा। चेयरमैन एंड एमडी एसआरएफ लिमिटेड श्री आशीष भारत राम महोदय, गौरव माथुर सीईओ एप्सिलॉन लिमिटेड, श्री बजरंग गोयल डायरेक्टर बजरंग स्टील एंड पावर लिमिटेड,
Shri Rajesh Mittal, Chairman and MD Greenply Limited, Dr. Subrat Mukherjee, Chairman and MD Sobha Solar Limited. आमे आपण समस्तଙ୍କୁ स्वागत जनाछु तथा एठारे उपस्थित समस्त निमंत्रित अतिथिवर्ग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स वेरियस स्टेकहोल्डर्स नोटेड ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स मीडिया बॉडीज वी wholeheartedly welcome you to the historical day आजिर ऐतिहासिक दिन निश्चित भाबरे ओडिसा रे उद्योग विकास रे एक नूतन अध्याय लिखिबो आमे माने समस्त मिसी ऐतिहासिक शुभारंभर साक्षी हेबाकू जाउछि आजिर मुख्य अतिथि जहाँकर सुदृढ़ प्रयास स्पष्ट नीति एवं कार्य पद्धति आज ओडिशा शिल्पीय विनियोग रे भारतर प्रिय गंतव्य पलटि पारिछि रेकर्ड संख्या रे नुआ कार्य संस्थान सृष्टि होइछि ओडिशार प्रतिछवि विश्व मानचित्र रे एक स्थायी एवं प्रभावशाली चिन्ह रखि पारिछि आमे समस्ते आपनको पुणी थरे स्वागत जनाउछु तेबे कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भावे आगे नबा पई ओडिशा रे शिल्पीय प्रगति एवं उद्योग विकास रे जहाँकर नेतृत्व सुदृष्टि और प्रयास सदा सर्वदा प्रशंसनीय होई परिछि म अनुरोध करिबी एसीएस इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट श्री हेमंत शर्मा महोदय मंच को आसीबे एवं स्वागत उद्बोधन कार्यक्रम रे परिप्रेक्ष्य रखिबे। On behalf of Industries Department, Government of Odisha, I extend a very warm welcome to Shri Mohan Charan Maji, our Honorable Chief Minister, who is our guide, mentor and leader and is the brain behind organizing a program of this kind. I also extend a warm welcome to our Honorable Minister of Industries, Skill Development and Technical Education, Shri Sampat Charan Swai, who is the captain of our team and is leading from the front. I also extend a warm welcome to Shri Manoj Ahuja, Chief Secretary, Ma'am Anu Garg, Development Commissioner, the team of senior officers from IDCO, EPICOL, Factories and Boilers, Labour, Pollution Control Board, Weights and Measures, all departments of the state government who have something to do with increasing economic activities in the state. I would also take this opportunity to not only welcome but also introduce some of the special guests which we have today on stage and also in the audience. First, I take this opportunity to introduce Shri Ashish Bharatram, the chairperson of SRF Group, who is one of the esteemed members, the doyen of Indian chemical industry, and we are very proud to have him amongst us today. We also have Bajrang Agarwal from Bajrang Power and Steel. Later in the program, I would be introducing what is their contribution not only to today's program but to the industrial activity upcoming projects in Odisha. We are also proud to have today Shri Rajesh Mittal from Greenply. Greenply is a very well known name brand in the country, and we are very proud to have him today amongst us. He would be setting up a very large plant at Simliguda in Koraput district of Odisha. We also are proud to have Shri Gaurav Mathur from Epsilon Group, who would be setting up a very large chemical complex close to Jharsuguda. And also Mr. Mukherjee from Sobha Solar, who is setting up a plant for manufacturing of solar modules, cells and wafers at Angul in Odisha. But this is just a sample of the audience which we have today. Aside from these 5 industries who are present on stage, they are actually representing a group of 27 industries for whom groundbreaking would be held today. They are all present in the audience. The second and very important group of audience today, very important group of people whom we have today, is 30 numbers of star employers in Odisha, those who have contributed in creating industry and commercial employment in Odisha, and we extend a very warm welcome to each one of you. Sir, today in the audience, we have brought not only the star employers, but also the star employees from these 30 companies who have benefited from the leadership of Shri Mohan Charan Maji, Honorable Chief Minister, in the last 1 year and have got jobs and employment opportunities within the state. Sir, since we have star employers,
and new industries coming, we also have invited leading engineering colleges and universities. We are proud to have Centurion University and their entire placement team here. We are also proud to have C.V. Raman Global Institute and their entire team here today, their placement team and budding engineers and managers in order to do this matchmaking between employers on one side and prospective employees on the other side. Sir, we also are joined today with 5 locations in the field. We have a group led by the collector Jharsuguda at Jharsuguda who are on video link with us. We also have a group online from Gopalpur in Ganjam, from Angul Aluminium Park, from Khurda, and these 5 locations have the top industries, top employers in those locations, along with local dignitaries, members of the Legislative Assembly, our esteemed guests, who are also joined online with us today. But what is the significance of today's event? Having welcomed and introduced each one of you, let us put our minds together and understand what is the significance of today's event. Is it a groundbreaking ceremony, or is it a felicitation ceremony for employers? Actually, it is not that. Groundbreaking ceremonies we organize every month. Felicitation of star employers we have started organizing from today. Later in the day, Honorable Chief Minister will be visiting an event called Nijukti Mela. Nijukti Mela is organized by the government, where government departments provide employment job letters to those who have found employment in the state government. On many occasions, we are asked that what is it that Industries Department has been doing in creating employment? How do we know that this employment is being created? So when we conceived this program under the guidance of our Honorable Industries Minister, we thought of celebrating 2 things which are important. Before I go there, I will play a short video of Honorable Chief Minister, which actually gives the context of this program, what this program is all about. आजिर कार्यक्रम उद्देश्य कौन अच्छी महत्व कौन अच्छी सेटा आपण माने निजे माननीय मुख्यमंत्री का स्पीच रु सुनी ऑडियो ऑडियो I'll play it again. Shall I play it again? Console, please. Click. All right, I think there is sometimes technology will play foul, and obviously we need to improve this technology. I'll come back to this audio. This is very important. It would have actually set the tone for what we are planning and implementing today in terms of top priorities of the state government. This video actually is a clip of the Honorable Chief Minister's speech at the curtain raiser event of Utkarsh Odisha in Delhi, where Honorable Chief Minister mentioned how he would lead the team of the government in extending a welcome to the industrialists and investors who come from outside. 2 priorities have been set by the Honorable Chief Minister. And what are those priorities? The first one is speed of doing business. All of us know, have been talking of ease of doing business, but there is something called speed of doing business.
27 industrial units to be grounded today with an investment of 25,379 plus crores of investment in 15 industrial sectors across 12 districts. This is called speed of doing business. The speed I will explain a little later in the program. The second, what is called ease of implementation. Less than 160 working days, we have been able to convert these 27 investments into actual grounded projects. ठीक अछि, our ease of implementation hela, speed of doing business hela. बात तार outcome कौन? ये ease और speed. Odisha वासिंग पाई तार outcome का कौन? The outcome is actually what is called 51,856 jobs, which will be created as part of the program. In the last 16 months, our government has been able to complete 16 single window meetings, many of which were chaired by our Honorable Chief Minister, and where more than 269 projects were approved, worth 6 lakh crore, creating employment for 3.76 lakh people in the state of Odisha. And more importantly, this is a focus on new sectors and new districts, what is called sectoral diversity. While mining and metallurgy continue to remain important, but we have now progressed to chemical, food processing, green energy equipment, downstream of metals, apparel, textile, tourism, agro-processing, infrastructure, and utilities. This is called sectoral diversity. This is how we have been able to achieve the sectoral diversity. The second point is regional diversity. Under the guidance of our Honorable Chief Minister, our investments are now no longer limited to 4 or 5 or 6 districts. They are spreading throughout the state. And take a look at this map of Odisha, where you will find the number of industries grounded in each district of Odisha compared with what was done in the previous 5 years per annum. And you would find that in 27 out of the 30 districts, the number of industries grounded is much, much larger than what was achieved earlier. And this is what is called not only speed of implementation, but also ease of implementation. But how do we actually explain it in terms of some of the success stories? Are there any live examples which we can see? So some of the live examples are actually there on stage itself. How promise can be shown by way of proof. This is a promise, ease of doing business is a promise, speed of business is a promise, ease of implementation is a promise. What is the proof of this? And here I am going to present some of the proofs which will make it evident. For instance, we have Shri Ashish Bharat Ramji, chairperson of SRF Limited. He came to Odisha first contact on 14th May 2025. This is his photograph visiting Gopalpur at Ganjam. And on May 23, the project application was made. June 16, the project approved. September 1, the land had been identified and handed over to the company. And today, groundbreaking is being done. 110 days, 10,000 crores of investment and 20,000 jobs. This is called speed of doing business, and the first proof is here presented before you. Second one, Linde India. The first contact was at Singapore Roadshow on November 17, 2024 with Honorable Chief Minister receiving the leadership, the Asia Pacific leadership of Linde Limited. You can actually see Mr. Abhijit Banerjee. He is also present here amongst us. November 17, the first meeting was there with Honorable Chief Minister. June 3rd, project application. July 25, it was approved. August 25, land has been allotted. And today, within a span of 232 days, 1,800 crores worth of investment, 200 jobs, and more importantly, the first global capability center to come to Odisha from Linde is being announced today in the presence of Honorable Chief Minister. The third, Greenply Group. We have Shri Rajesh Mittalji on stage, the leader of Greenply Group. Meeting with Honorable Chief Minister was on October 3rd, 2024. This is the photograph of the meeting in Delhi. On 14th of May, the land was in their possession. 184 days, 606 crores worth of employment, investment, and 1,300 jobs. But that is not all. The most important point is this is the first big
large investment at Koraput district, at Simliguda in Koraput district. This is, we call the speed of achievement. Bajrang Group, we have the representative of Bajrang Group here, the largest industry in Chhattisgarh. And we had the first contact with them on January 27, 2025. This is the photograph of a meeting where Honorable Chief Minister had shared a stage session with the chairperson of Bajrang Group. This is the photograph there. He is delivering the speech. On July 16, 2025, land was in their possession. 142 days. It took 2,000 crores of investment, about nearly 1,000 jobs. And this is the photograph taken yesterday. This is the photograph of the factory taken yesterday. The first large-scale titanium dioxide pigment plant being set up in India, not in Odisha. This is a plant being set up in India. So this is, these are some examples, evidence of how speed of doing businesses is happening. Repeat investments. What is the value of repeat investment? The value of repeat investment is confidence in the state. I have done one factory. Now I am encouraged to do second factory or third factory. That shows confidence in the state's leadership. Supreme Industries. On October 18, 2024, Mr. Taparia, he is the Doyen of Indian plastics industry, met the Honorable Chief Minister at Mumbai. On May 2nd, the project was approved, application was made. June 13, project was approved. And this is an expansion project, 197 days. Importance is, it's not in these numbers, the importance is that this is a repeat investment. The company has first come to Odisha, gained confidence and is now expanding in Odisha. Same thing with Epsilon Carbon. October 7, 2024, the first contact was made. October 17, the project was approved in November, and expansion project, 5,806 crores of investment, 2,500 jobs at Jharsuguda in Odisha. The company location are actually live with us today on video, linked with us. Now, emerging textile sector. Textile sector, Odisha has made a new entry just about a month ago. On 25th of July 2025, we did a Odisha Tax event where we signed MOUs with 33 companies, out of which 11 companies have taken land and 4 of them are present here today for their groundbreaking. This is the speed of doing business. In the paucity of time, all other 11 companies are mentioned here. The companies with which we complete the list of 27 for groundbreaking today. Most important learning point is that it has taken us average 165 days to ground 25,000 crores worth of investment, creating job opportunities for more than 50. But is that all? No, that's not all. What is the reason behind it? ये जो 300, 300, 400, 500 days रे जो हमारा process थिला, से 165 days को आसिकरी committee पहुंचीला. तार कारण कौन? I mean, we saw the evidence, but behind evidence, what is the reason? What is the logic? What has enabled this? So this has enabled this. कथा देई कथा राखिले लोकों का सरकार सृष्टि हेला नुआ रोजगार. This is not a cropped picture. ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है. ये एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है. उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव जनवरी 28, 2025 शाम के 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री सीईओ कॉन्क्लेव को जब उन्होंने एड्रेस किया, ये उसका फोटोग्राफ. और इस फोटोग्राफ में आप जिन इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज में से 15 इंडस्ट्रीज का ग्राउंड ब्रेकिंग आज यहां पर हो रहा है. ये जो 400 दिन 300 दिन की प्रक्रिया को हम 165 दिन पे लेके आए, इसके पीछे जो पर्सनैलिटी है वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी. ये उनकी लीडरशिप है. इस वजह से आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ 27. अब ये कथा देई कथा रखिले लोगों का सरकार सृष्टि हेला नुआ रोजगार, इसका क्या प्रूफ है? इसका क्या एविडेंस है? इसका क्या हमारे पास एविडेंस है कि ये रोजगार सृष्टि हुआ? जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, हर कंपनी जिसके साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मीटिंग हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पूछ रहे थे अभी कितना समय और लगेगा, अभी 12 महीने क्यों लगेगा, 14 महीने 18 महीने क्यों लगेगा? तो ये प्रश्न वो हमसे भी पूछते हैं. बार बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है
कि आपका ठीक है इनॉग्रेशन हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, रोजगार आया, आप बताते हो, उसका एविडेंस क्या है? तो आज हमने सोचा माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हम वो एविडेंस दें। और वो एविडेंस किस रूप में देंगे? इसके लिए हमारी टीम ने कहा कथा देई कथा रखिले लोकों का सरकार सृष्टि हेला नुआ रोजगार आज ही प्रस्तुत करू छु रोजगार प्रमाण रा उपहार। और सेटा हमें केमिति प्रस्तुत करिबु? ये जो ग्रुप ऑफ सीईओ सहित आपण माने माननीय मुख्यमंत्री के फोटोग्राफ देखुचंती से ग्रुप रु हमें 30 जन को बाचिलु, those who have already started giving employment and they are our star employers today. 30 टा स्टार एम्प्लॉयर्स मानक आज हमें आनी छु। We have hundreds and thousands of employers, but today we thought to make a beginning, let us bring 30 star employers and from different categories in order to honor them, to felicitate them while presenting their evidence before the Honorable Chief Minister that it is not just limited to groundbreaking, it is not just limited to single window approval, it is actually creation of job employment opportunities. And this is being done by Odisha's private sector. मु लास्ट को गोटे डिटेल आपण मानकु सम्मुख प्रस्तुत करिबी। ये जो स्टार एम्प्लॉयर्स माने अछंती से मानकर समस्त अपन देखिबे देयर आर कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, न्यू एज इंडस्ट्रीज, sectoral diversity, geographical diversity, and we have these 77,894 record of employment new created in the last 15 months. 12 जून 2024 रु 10 सितंबर 2025 पर्यंत 77,894 लोकों को चाकरी यही 30 टा कंपनी देइछंती, आउट ऑफ विच 56,859 are local residents of Odisha. 20% is our conversion rate. माने जो 3,75,600 एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल हमें क्रिएट करितलु ग्राउंड ब्रेकिंग माध्यम रे से ताठू हमें 77,000 अचीव करि सारिछु, 20% अचीव करि सारिछु मात्र वर्षे, in 1 year. Therefore, we would certainly achieve the target which is set for us by the Honorable Chief Minister. Now, towards Samruddh Odisha. I don't know whether I would be able to play this video or not. सर वो वीडियो प्ले करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज का हमारा जो कंटेक्स्ट है
Sir, we will now do felicitation of our star employers. I think there is some Bluetooth connectivity issue here. We will first take emerging industrial champions, those who have emerged as new entrants to our scene. First is Page Industries Limited, popularly known as Jockey. Supreme Industries Limited, the well-known plastics industry. Astral, again well-known plastics industry. Sapigen Biologics Limited. Tri-Metro Garments, Epic Group. IDVB Recycling, Jatiya Steel, and Ratnamani Metals and Tubes. Huh? So the next group of our industries are from SAPL, B1 Business House, Varun Beverages, Ampin Solar, Pragati Milk, Surya International, Deepak Mining Solutions, Odisha Plasto Pipe, CMR Aluminium, and Caldries Refractories.
Next group of industries is what is called excellence in industrial turnaround. These are industries who took over sick plants and have turned them around and created new opportunities. This is Dalmia Bharat Refractories Limited, who took over the Birla Tyres plant, BK Steel Industry Limited, and Rimjim Ispat Limited. Huh? चलिए. Sir, the next group of star employers represent inclusive industrial growth, geographical diversity, geofast consumer products at Bargad, Vijayanagar Biotech from Navaranpur, Indian Potash Limited from Kalahandi, Postal Biotech Limited from Gajapati, and MASH Biofuels from Sonpur. So the last group of our star employers and the most important ones are what are called Odisha's industrial champions. They are Tata Steel, Aditya Birla Group, Vedanta Limited, and JSW Group, the four industrial champions from Odisha.
Sir, the last and the most important star employer is the JSW Group, which are the single largest employers of Odisha. Yeah. I would request the Honorable Chief Minister and dignitaries to kindly take your seats, sir. हुए ओडिशा आने के लिए आप तैयारी कर चुके हैं और ओडिशा आने के लिए आह्वान कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं और मन कर चुके हैं। स्वागत करने के लिए आपको मैं स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार भुवनेश्वर में इंतजार, ओडिशा का प्रवेश द्वार भुवनेश्वर में आप इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा सरकार मैं और मेरा सरकार आपको भरपूर हमारी तरफ से स्वागत और समर्थन करेंगे। और निश्चित रूप से जो आज हमारा सपना है एक इंडस्ट्रियल हब करने के लिए उड़ीसा को, पूरी तरफ से आपका सहयोग से वो निश्चित रूप से बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पीच थी, उसका एक अंश था जो उन्होंने नई दिल्ली में कर्टन रेजर के लिए दिया था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब आप जो इन्वेस्टर्स उड़ीसा आने के लिए अपना मन बना चुके हैं, मैं उनका स्वागत करने के लिए उड़ीसा के द्वार प्रवेश द्वार भुवनेश्वर पर अपनी टीम के साथ खड़ा रहूंगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट उनका एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने 8 अप्रैल जिसको एमओयू साइन करते हुए काम अपने आप से हो जाएगा और हमने उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो बात तो नहीं है। और हमने भी हर दिन उसको देखते हैं, मेहनत करते हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए, इसको मैं एक बार और प्ले करूंगा। पहली बार मैंने प्ले किया इसको। इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एमओयू साइन कर दिया, इसी से इंडस्ट्री हो गई, ऐसा नहीं है। इसको हम हर दिन देखते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, ये ऑनरेबल सीएम ने कहा। ये पहली बार इन्होंने कहा आप लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दूसरी बार इन्होंने एक बार और कहा, वो किसके लिए कहा? वो मेरे लिए कहा, जो मेरी टीम के सदस्य हैं, इडको में, इपिकॉल में, डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज बॉयलर्स में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, जिले में, उन लोगों के लिए कहा। क्या कहा उसको आप एक बार और ध्यान से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही बात दोबारा कही। इसको एमओयू साइन करते हुए काम अपने आप से हो जाएगा और हमने उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो बात तो नहीं है। और हमने भी हर दिन उसको देखते हैं, मेहनत करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो संदेश दिया है दोबारा, वो ये है कि एमओयू करना, ग्राउंड ब्रेकिंग करना हमारे कार्य का एक शुभारंभ, एक हिस्सा है। लेकिन मुझे, मेरी टीम को, जिले में उपस्थित जिलापाल लोगों को, तहसीलदार को, जितने भी हमारे सरकारी तंत्र के सदस्य हैं, उनको सबको इनको हर दिन देखना है और हर दिन मेहनत करनी है। धन्यवाद। अशेष धन्यवाद श्री शर्मा महोदय। समस्त सम्मानित शिल्पीय संगठन और अधिकारी मानक विशेष सेगमेंटरी अवार्ड पाइथिबा पई हृदयरु अभिनंदन जणाउछु। पुणी थरे जोरदार करताली आशा गर्छु। कैन वी एक्सपेक्ट अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज? थैंक यू।
प्रशासनरे दृढता और सुस्पष्ट निर्णय परिचय नारी नेतृत्व अनन्य उदाहरण वर्तमान आमंत्रण करुछु उन्नयन कमिश्नर तथा अतिरिक्त शासन सचिव श्रीमती अनुगढ़ महोदयांको तांकर उद्बोधन प्रदान करिवे। जोरदार करताल दे स्वागत करिबा। Honorable Chief Minister of Odisha, Honorable Minister Industries and Skill Development, Chief Secretary Odisha, all the distinguished business heads on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. At the outset, let me congratulate each one of the champions who have made us proud, and to each one who is waiting to be felicitated here next year or maybe even earlier if Hemant so decides. Whenever we have Utkarsh Odisha, we feel very happy when there is so much of declaration of intent. We are next to Maharashtra in the number of investments that are coming in, and the scale and speed at which we are going, perhaps we can even beat that. But what gives us even more happiness is events like this, where we have groundbreaking of those declarations now actually becoming reality. And what gives us even greater happiness is when we get data that employment has been given to almost 77,000 people of Odisha. I think that really gives us a lot of happiness. So congratulations to each one of you. In our state, as many of you are aware, we have our vision document, which has recently been released by the Honorable Prime Minister of India. And in that document, like other states, we have articulated our vision for 2047, when India turns 100. But what is unique to Odisha is that we also have a vision, a clearly delineated vision for 2036, when Odisha turns 100. And that becomes a very, very important milestone for us. We have been very ambitious, I think a little too ambitious, but I think it is aspirational. We have set a target. At present, as you are aware, we are a $118 billion economy. We have targeted that by 2036, we will become a $500 billion economy. And by 2047, a $1.5 trillion economy. And at present, we are only 2.89% of the national GDP. By 2036, we are hoping we will be 4%, and by 2047, 5% of the national GDP. While doing so, naturally, the growth will have to be in double digits. Again, very formidable, but achievable given the way things are moving. We have based this vision, which has been an effort of all our stakeholders. We took inputs from almost all sections of society. And in this vision, we have based it on 3 pillars. The pillars are A, Samruddhi, prosperity, where of course we will want more number of ports, more number of airports, our urbanization, which is at present 17%, how we will take it to 40% by 2036 and then 60% by 2047 and use it as an engine of growth. But apart from that, we also have another pillar, which is regional development and equity. So basically, how do we ensure that whatever growth takes place is also inclusive? And in that, it is also regional development. So it gives us great happiness when we find that industries are now coming up in Navrangpur, in Koraput, and other places. And also, how do we make women part of this growth story? So it's very exciting that
so many industries are now coming up, particularly textiles industries, where almost 80% of the workers are women. And you'll be happy to know that very recently we have eased some norms in our labor laws, which would further facilitate that. And also the third pillar is, of course, well-being, where we would like all the people individually to have good health and to do well. So for doing that, we have to have all of you working very hard, and as industries, you will be contributing not just to the Samruddhi, but also to the equity, also to the personal well-being. And to all the children, students who are present here, I hope that you will go back with not just knowing what is happening in the state, but with dreams that one day you will also be an entrepreneur, standing here receiving an award and giving employment to thousands and thousands of Odia boys and girls. So on that note, I wish you all the very best, and we hope that together we can achieve this vision for Odisha. Thank you. अशेष धन्यवाद डीसी कम एसीएस श्रीमती अनुकर महोदय। सुचारू प्रशासन में स्थिरता और समन्वय प्रतीक, विकसित तथा समृद्ध ओडिशा 2036 अभिमुखे दृढ़ विजन सहित कार्यरत चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जोरदार करताली स्वागत करवा श्री मनोज आहूजा महोदय को तांकर संबोधन पर। समस्त को नमस्कार। आपण मान को मु सभा स्वागत जनाऊँगी। Our chief guest for the meeting, Honorable Chief Minister of Odisha, Minister Industries, my colleague Development Commissioner, our esteemed captains from the industry on the dais, Shri Ashish Bharatram, Mr. Bajrang Goyal, Mr. Subrat Mukherjee, Mr. Rajesh Mittal, Mr. Gaurav Mathur, my other colleagues who are present here, representatives and from the industries, students who have come here from technical institutions and engineering colleges, and those who have joined us online from 5 districts. Let me first of all compliment all of you who are present here. First of all, the industries who have placed their faith in the state and followed up, and in record time have been established their industries for this groundbreaking ceremony. I would also like to congratulate the department, the industries department, which has so assiduously followed it up and ensured that this is possible. And I would also like to thank the technical institutions and others who are students are there and who are being trained to gear up for the jobs which will be available and take these jobs. It's in fact heartening to know that within this short time, about 27 groundbreaking projects would be there, 25,000 crores of investment and 52,000 employment which has been generated here. I want to reassure everybody who is present here that under the leadership of Honorable Chief Minister, the state has a single-minded focus, and that is to ensure entrepreneurship and ensure jobs for the youth. Every year about 3 lakh students are graduating in this state, and there are a lot of others who are there looking for jobs in the job market. And unless we create the jobs, well-paying jobs will not be available. And in that context, the government understands that
while the government plays a facilitative role, most of these jobs will be created by industries in the private sector across the primary, secondary or tertiary sector. And the government is committed that to make it happen. I was discussing with Mr. Bharatram, who is sitting next to me on the dais, what brought him here. Why did he, of all these states, decide to come here? And he said as much that in the last 1 year, he's got very positive feedback about the state and the state's policies and the outreach what has made him come here. And then after coming here, he said a lot of promises are made, but then a follow-up in terms of what we call a red carpet was also there. And he's very happy that he's taken a decision and decided to invest in Odisha. And I want to thank him for taking this decision here. The Honorable Chief Minister, Hemant mentioned about his dream, his directions. You know, he has also told us that please don't benchmark yourself with other states, look globally. He said, why is it countries like China have developed at such a fast rate? Why is it that they have special economic zones? Why is it that they are producing this and we are not? Why is it that IT industry is coming there? Or why is it that textiles, Bangladesh is better, Vietnam is better, Malaysia is better? And that means that what we are going ahead is with a very determined plan of action and very professional. We understand that for industries to come here, it should make economic sense. And the ways economic sense can be made is, one is obviously in terms of the way they do business. We remove hurdles, they're able to invest, good logistics, good manpower, and the entire ecosystem which is available, which we are trying to put in place. Second thing is we have the state is fiscally in a very sound position and we are able to give very good incentives. And this we are giving in the belief, and again I'll repeat, in the belief, for example, an industry comes in, it's not only the 51,000 which you are showing here, the jobs which will be created, but around that, you know, there'll be transportation which would be needed, logistics which would be coming up, people would be residing there, hotels would be coming up, shops would be coming up. So there's a whole indirect jobs which will be created in the economy, and also our local entrepreneurs. There will be demand for products, there will be requirement for ancillaries, and which would help a lot of our homegrown entrepreneurs to scale up and start producing all these things. I do remember these tales were related by the Honorable Chief Minister himself, and it stuck in my mind. You see, when we talk about entrepreneurship, it is not something which only a few possess. I think we are a state of 4.5 crore people, and there are many who would have ideas and who can scale up, who can develop, who can create jobs if the right environment is there. And that is what the state is focusing to do. The story which the Honorable Chief Minister had narrated, I still remember, it is about Keonjhar. He talked about a person. He said there was a person who was uneducated, matric pass. He decided one day that he would, on a motorcycle, he'll make it fly. Now can you imagine? Somebody in a far off district, he had the vision, he had the dream, he'll make it fly. He even tried that, putting a rotor on top of that. It flew, but it fell down and he got hurt. But I'm saying in terms of thinking, his audacity and Elon Musk's audacity are the same. Just imagine the thought that he could make it happen. Second story which was told was about somebody who used to do a little bit of repair, again not very educated, and he realized, he listened to All India Radio that time and he made a radio station in Keonjhar. And from there, he also said, if All India Radio station Cuttack can do that, why can't I also can't do that? He kind of went in and put his broadcast into All India Radio Cuttack's broadcast. Obviously, then the government would have gone and said, why did you do it, and inquire. But the point I am trying to make is, people have ideas. There are so many entrepreneurs in Odisha, in otherwise, if these people can think, there will be so many others who can think. And the government's job is that, to recognize that, facilitate that, and let them grow. And one of the prime things what we are doing is, we are trying to ensure that we are not hurdles for you. We will expedite things, but that we are not hurdles for you. Hemant pointed out ease of doing business, getting things in time, ensuring that whatever problems are there, we sort it out, providing with investing, whatever failures are there,
One good example I'll tell you of a government intervention is in the MSMEs. They made a cluster for engineering units. Now they were not able to procure high-end equipment. So now that high-end equipment is there, now they are creating things which is going national, which is going global. For quality testing, they were not able to put that equipment themselves. So a common center, a cluster where they could put all that, and they are able to do. So that's our aim. Understanding in a very systemic way, giving a fillip, and with the kind of entrepreneurship which is available and the dynamic leadership which it's available in the state, we are there, and we do hope that the dream which is there and which every youth coming out of college wants. He wants a good job, and that job and that fact that he wants a good job and that the state wants to fulfill, we'll be able to do, and we'll be able to do only if all of you come, you invest, and you will invest only when we are able to give you a facilitative environment. That is our aim, and we look forward for your partnership and even higher goals. If you've invested once, do come in other fields. All of us will be there, and the dream or the vision which is there in the Viksit document would come true, especially for the countless number of youth, for giving them good livelihoods, for giving them good jobs. Thank you so much. Thank you for the inspiring words. Ladies and gentlemen, time has arrived for an important part of this entire event. वर्तमान पर्यायर आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय करकमल विभिन्न जिलार गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प गुड़िकर शिलान्यास स्थापन हम ता पूर्व मुझे से प्रकल्प संपर्क में किसी कहवाक चाहूँगी। सर्वप्रथम SRF गोपालपुर SRF Limited, a leader in the chemical manufacturing sector, is setting up a world-class manufacturing facility at Gopalpur, Ganjam, with an investment of rupees 10,000 crores, generating an impressive 20,000 employment opportunities in the region. मो अनुरोध करी माननीय मुख्यमंत्री महोदय निज करकमल रे रिमोट रो बटन दबे ए शिलान्यास स्थापन समारोह शुभोद्घाटन करेंगे। आपण माने भी विपुल मात्रा रे करताली दियंतु आम सहित ए खुशी रो अवसर रे शामिल हो। Big round of applause, please. Yeah. One more time. Please clap. Yeah. आम सहित गोपालपुर गंजाम रे योगदान करुछंती जिलापाल तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री कीर्ति वैसन वी महोदय अनुरोध करिवे निज शब्द रखिबे। अतिथि मानक अनुरोध करुछि निज स्थान रे बसि जिबा। समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय, माननीय मंत्री शिल्प विभाग श्री संपत चंद्र स्वाइन महोदय एवं राज्यस्तर कार्यक्रम उपस्थित सम्माननीय चीफ सेक्रेटरी सर एवं समस्त सीनियर ऑफिशियल्स, विभिन्न इंडस्ट्री आसथिबा समस्त स्टेक होल्डर्स, समस्त को आज कार्यक्रम को स्वागत जनाइबा सह टाटा एसईजेड भितर जो एसरे
ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ମାननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद जनाउछि गंजाम जिल्ला रे 10,000 कोटी व्ययर गोटे शिल्प को ग्राउंड ब्रेकिंग करथिबा पई बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी, नमस्कार। अशेष धन्यवाद। वर्तमान आमे झारसुगुड़ा आड़े अभिमुखे जिबा एप्सिलॉन मु आपन को कहबा को चाहिबी एप्सिलॉन कार्बन सोका प्राइवेट लिमिटेड स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग कार्बन डेरिवेटिव्स एंड एडवांस्ड battery materials in establishing a major facility in Jharsuguda with an investment of 5,806 crore, creating 2,500 employment opportunities and strengthening India's presence in next generation materials. उद्घाटित हेलास जोरदार करताली दियंतो अशेष शुभेच्छा झारसुगुड़ावासी को। वर्तमान आम सहित झारसुगुड़ा जोड़ी हेबे श्री कुणाल चवन मोइत्रम सर कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट निजर उद्बोधन रखिबे। ऑडियो इश्यू होइछि मो अनुरोध करछि जदि झारसुगुड़ा टीम हमको सुनी पारुछंती ऑडियो कनेक्टिविटी करबा पई। आमे अल्प किछि समय परे फेरी जेबा झारसुगुड़ा को। वर्तमान समय हेछि मंचरे आम सहित किछि इंडस्ट्री लीडर्स अछंती जो माने तांकर अनुभूति आपनक सहित शेयर करिवे। अनुरोध करिवे सर्वप्रथम एसआरएफ लिमिटेड आम सहित अछंती चेयरमैन एंड एमडी श्री आशीष भारत राम महोदय पोडियम को आसेबे तथा आम अगस्त गैदरिंग को एड्रेस करिवे। जोरदार करताली दे स्वागत करिवा। Honorable Chief Minister, Shri Mohan Charan Manji ji, Minister of Industries, Shri Shampat Chandra Swen ji, Chief Secretary, Shri Manoj Ahuja ji, Development Commissioner and Additional Chief Secretary, Ms. Anu Garg, Additional Chief Secretary of Industries, Mr. Hemant Sharma, various dignitaries on the dais, friends in the audience, and at the remote sites, a very good morning to you. It's indeed a privilege for me to be here today for the groundbreaking ceremony of our chemical site in Ganjam. Since we are new to Odisha, I thought I'll just take a minute to first share what it is that SRF does, and then I'll share a little bit about our experience so far. SRF is a manufacturer of chemical industrial intermediates, revenue of roughly $2 billion and a market capitalization of roughly $10 billion. We have now become largely a chemical company with 50% of our revenues coming from that, and largely in the space of refrigerant gases, specialty chemicals, etc. Our biggest site so far has been in Gujarat, and for the last 2 or 3 years, we have been hunting for a new site for our chemical complex. As Manoj was saying that over the last 1 year, while talking to various friends in the business community, people started saying, why don't you look at Odisha? Now, very honestly speaking, Odisha was, in my mind, always a state that was linked to industries which had to do with natural resources. And when people started speaking about this, I said, maybe there is something more to Odisha that I need to look at. And as Hemantji was saying in his opening remarks, May 14th will probably be a very eventful day in the history of SRF. I came down on the 14th of May along with my team. We drove down to the site at the Tata SEZ in Gopalpur. And what I saw over there was an absolutely top-class industrial estate with a fantastic infrastructure for roads, water reservoirs,
power connections, pipelines into the port. I would say in my 25 years of working, I have not seen an industrial estate of that caliber anywhere in India. We came back that afternoon, spent an hour with Hemanji in the evening, and when he started talking about all the various incentives, the various things that the Odisha government offers, it was sold for me as far as I was concerned. We went back that night, clear in our heads that our next, we have found our location for the new chemical zone. As he said, in my wildest of dreams, I would never have thought that in 110 days from our first conversation to actually doing a groundbreaking would be possible in India. And I think full credit goes to the Honorable Chief Minister, under whose leadership we've seen such a dynamic state. And I was telling Manojji again that, coming from a chemical background, I find that there are very few states in India today which are offering what Odisha offers, which is a red carpet for the red industry. Okay, and I genuinely believe that Odisha needs to talk a lot more about this. Chemical industry, chemical companies across India are struggling to find a good location. And as Anuji, you were talking about the various aspirational goals that Odisha has set for 2036, 47, and so on, I genuinely believe that the chemical industry is bound to grow in India, and there can be a lot of investments coming from that sector into Odisha. So this is something that I genuinely feel can be a big breakthrough for Odisha in time to come. Lastly, I see some young graduates at the back. I hope that as we grow in Odisha in times to come, as we said that our goal is that in 10 years we should be close to employing 20,000 people. A lot of you will have the opportunity to become part of the SRF family. We have always believed that we should work with the local community, give as much employment to locals as possible, develop the community around. One of the things that the Shriram Group is known for is what we have done in the field of education. I hope at some stage we can add to that in the communities around us by bringing in some quality schools, etc., and making a difference not just in the context of employment, but also adding to the community. And again, as Manojji said, hopefully create a tertiary sector where we can develop local entrepreneurs to become ancillary suppliers to companies like us. At the end, I would like to thank the Honorable Chief Minister once again for the vision with which he has taken Odisha forward. SRF will be not just a responsible citizen, but I hope in times to come, just like the 4 stalwarts who received the award for being a solid citizen of Odisha, one day SRF is also a part of that. Jai Hind. Thank you so much for those inspiring words. Ladies and gentlemen, moving forward, we have the presence of CEO Epsilon Carbon Asoka Private Limited, Sri Gaurav Mathurji. I'd be requesting you to kindly address the August gathering. With a round of applause from all of you. Thank you. Honorable Chief Minister Shri Manji, Honorable Minister of Industries Shri Swainji, Chief Secretary Saab, Development Commissioner, my esteemed industry colleagues on the stage, esteemed industry colleagues in the audience, large number of government officials in the audience, and of course, students and other members. It's indeed an absolute pleasure for me to stand here. And first and foremost, I congratulate the Honorable Chief Minister for this magnificent function and opportunity, which showcases how rapidly Odisha is progressing on its industrial path. A word about a few months ago, I want to give an example. Mr. Sharma mentioned about the Honorable Chief Minister following up, and I want to give an example. A few months ago, the Honorable Chief Minister traveled to Mumbai, and we got a call from Sri Sharma that he would like to meet some of us who are based in Mumbai who are investing in Odisha.
And it was indeed a great pleasure and a very positive interaction where the Honorable Chief Minister inquired in depth about our industry, what we are doing, what help and support we need. That gave us a very, very clear indication of what Mr. Sharma mentioned about proof and promise, and not only speed, but ease of doing business. So thank you again very much for that opportunity and continuing that day-to-day follow-up and interaction. Epsilon Carbon is investing in an integrated carbon complex in Odisha, where we will have state-of-art technology. We are going to make a product which will go into the aluminum industry and uses a waste stream from the steel industry. So this is contributing greatly to the circular economy. We use the waste from one industry and we supply it to another industry. So for the environment, it is a fantastic solution, and also serves towards providing a huge number of employment as well as new technologies coming in. In addition to the employment opportunities, I'm also very happy to share that we are going to have leading environmental practices. And for example, for our boilers and heaters, we are going to use biomass. So that is going to reduce the environmental pollution significantly from conventional means. I would again like to thank the Honorable Chief Minister for the great impetus that he's provided, and also both the administration in the capital at Bhubaneswar as well as the local levels. The big difference is that when we speak to different government officials at the district and state level, it is not about questioning what you are doing, but it is about asking the question, how can we help you? And that is the significant difference that we see in Odisha. So thank you again, and we really look forward to invite the Honorable Chief Minister to the opening of our facility somewhere towards the middle of next year. And I wish the state of Odisha and all the young people over here all the very best on this fantastic journey that the state has embarked under the Chief Minister's leadership. Thank you so much. Thank you so much, Sri Mathur. Moving forward, we have the gracious presence of Sri Bajrang Goyal, Director, Sri Bajrang Power and Metalex Limited. I'd be humbly requesting him to deliver his speech. Thank you. Jai Jagannath. Good afternoon to all the esteemed guests present here and those joining us online. I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Minister, Shri Mohan Charan Manji, and Honorable Industry Minister, Shri Sampath Chandra Soy, for gracing us on this groundbreaking ceremony. Their visionary leadership has created a conducive environment for industries to thrive in Odisha. I must commend the state government under the leadership of Honorable Chief Minister for its excellent work on speed of doing business and ease of implementation. This has been a key factor for our investment in Odisha. I'd like to introduce the Goyal Group, one of Central India's largest conglomerate, with diversified portfolio spanning from metals, mining, energy, media, FMCG, healthcare, and education. With over 3 decades of experience, our group has a strong financial background and a turnover of 10,000 crores and a dedicated family of 5,000 employees. Now aligning ourselves with the vision of Atmanirbhar Bharat of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we are proudly expanding into rare earth minerals, starting with ilmenite and setting up a titanium dioxide facility in Khurda. Upon completion, this will be India's largest titanium dioxide manufacturing facility in a single location. We would be investing 2,400 crores and employing more than 1,000 employees. I sincerely thank the state bureaucracy led by Shri Manoj Ahuja, Chief Secretary, and Shri Hemant Sharma, Additional Chief Secretary, for their tireless effort in ensuring effective policy implementation.
The teams of Epicol and ITCO have been instrumental in our journey, and we look forward to collaborating with them and achieving our production goals. Lastly, I'd like to express my gratitude to the people of Odisha for their warmth and support. Together, we are confident of contributing towards state growth and our prosperity. Thank you. Jai Jagannath. Thank you so much. I would be now requesting Chairman and MD Sri Rajesh Mittal from Greenply Group to kindly address. Of course, followed by a round of applause from all of you. Namaskar. First of all, I would like to place my sincere thanks to Sri Mohan Charan Majhi ji, or our Honorable Chief Minister of Odisha, for performing this groundbreaking today despite his busy schedule. Other dignitaries like our Industry Minister Sampat Chandra Swain ji, Sri Manoj Ahuja ji, Madam Manju Garg ji, Sri Hemant Sharma ji, and other senior officials, colleagues from industry and media. It is a privilege to join you on this milestone day of Simligura, Greenply and Odisha state. Friends, Greenply, through its 100% wholly owned subsidiary, is establishing 2 manufacturing units of ply and MDF at Simligura. MDF plant with investment of 505 crores with employment potential of around 450 jobs. Plywood and allied products plant with an investment of 160 crores, having employment potential of more than 800 jobs. Friends, so far our experience with single window facility, land allotment approvals and other department coordination has been excellent. Government has been supportive of all initiatives and implementation of our projects in Odisha at all the stages. In fact, these projects are based on agroforestry, timber raw material. And in true sense, its groundbreaking by Honorable Chief Minister is the beginning of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji vision. Primarily towards Atmanirbhar Bharat, his vision of making India an implementation of quality control order on ply and panel product has given the boost to Indian products, in turn multifold increase in employment and greenery. Being president of Federation, FIPI, Federation of Indian and Plywood Panel Industry, which represents almost 4,000 industries, my special thanks to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Secondly, this will help the vision of Honorable Prime Minister of having Har Med Par Ped. In Greenply, we follow the philosophy of grow together and support large-scale agro-farm forestry plantation. Friends, I am very happy to share with all of you, so far we have already covered more than 1 lakh acres of land, planting more than 75 millions of saplings in the vicinity of our 5 existing units. We have also started the same work in Odisha well in advance. And I'm sure we'll see the reality of Har Med Par Ped in this region. Third, this will ensure the dream of Honorable Prime Minister of increasing the farmers' income. The project will result into inflow of around 2,800 crores of funds in rural area in each plantation rotation period. Moreover, it will also help in 33% green cover target of Government of India and effective contribution towards carbon neutral economy. CM sir, despite knowing the challenging of infrastructure connectivity, at Simligura we opted the area of mutual development on the confidence that the way of Government of Odisha is extending the support, we will come over challenges and ensure not only timely completion of this project, but plan for our next major expansion. Friends, today groundbreaking is really the grounding of great vision and marks the start of long-term partnership between Greenply and Odisha. And I am sure will in real terms
It will translate the Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister vision of Atmanirbhar, clean, green and prosperous Odisha and India. Once again, my sincere thanks to Honorable Chief Minister, sir, Industry Minister, and all the Chief Secretary, Manoj Ahuja ji, and all the government dignitaries and everyone, all senior officers of government, and for your trust and support. Together, we'll build not only the industry, but a better and prosperous Odisha. Jai Jagannath and Dhanyavad. निश्चित भाव में एकतार ही शक्ति अच्छी सरकार तथा लोकंकर सम्मिलित प्रयास रे अर्थनैतिक अभिवृद्धि सुनिश्चित वर्तमान कार्यक्रम रे आउ एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय आपण माने प्रथम पर्याय रे दुईटी प्रकल्प रे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखिथिले वर्तमान तीनोटी लिंक माननीय मुख्यमंत्री महोदय निज कर कमल रे रिमोट बटन दबाई शुभारंभ करिवे सर्वप्रथमे हमें जेबा बजरंग Power and Metallics Limited, which is setting up a state-of-the-art facility in Khurda with an investment of 2,096 crore, comprising a titanium dioxide pigment manufacturing plant and a sulfuric acid unit, generating 940 employment opportunities while boosting industrial growth in the region. Congratulations. Ashish Dhanyavad. Chaturtha Lingdi, Sobha Solar, Anugul, a pioneering renewable energy company, now stepping into manufacturing high-efficiency solar cells at its new facility in Anugul with an investment of 380 crore, creating an employment potential of 850 opportunities for the region. Ashish Dhanyavad. Congratulations to Anugul as well as Khurda. Vartaman amaro Green Ply Koraput ade ame abhimukha korchu. Green Ply Group, which is establishing a facility at Simligura, Koraput with an investment of 606 crore dedicated to the manufacturing of medium density fiber products, etc. This initiative will generate 1,300 employment opportunities, contributing significantly to regional development and industrial growth. Ashish Dhanyavad. Odisha Vasinku तथा शिल्पीय संगठन अधिकारी एवं दलों को आशीष धन्यवाद मैं अनुरोध करी अतिथि माने निज निज स्थान में बसीजे सम्मानित अतिथिगण दर्शक वृंद ओडिशार शिल्पीय विकास और कौशल संबलित ओडिशार स्वप्न को साकार करुथिबा तथा निजर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे दिन राति अहोर परिश्रम करुथिबा माननीय शिल्प कौशल दक्षता विकास मंत्री ओडिशा सरकार श्री संपत चंद्र स्वाई महोदय को तांकर प्रेरणादायी उद्बोधन पर विनम्र अनुरोध करुछि जोरदार करताली दे स्वागत करिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज शिल्प प्रकल्प समूहर शिलान्यास समारोह आज ये समारोह रे आम सहित मंचे उपस्थित अछंती। आज मुख्य आकर्षण तथा 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर आशा विश्वास एवं आम सरकार रे लोकप्रिय मुख्यमंत्री समस्त ओडिशावासींकर प्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य मोहन चरण माझी महोदय एवं आम सहित आज वर्चुअल माध्यम रे जोड़ी होती आमर गंजाम जिलू मान्यवर विधायक के अनिल कुमार, मान्यवर विधायक कृष्णचंद्र नायक, मान्यवर विधायक प्रताप नायक एवं अनुगुल विधायक मान्यवर विधायक प्रताप चंद्र प्रधान महाशय एवं उपस्थित अछंती एठी मंचेरे आम राज्यर मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा महाशय उपस्थित अछंती आमर डीसी कम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनु गार्ग मैडम एवं उपस्थित अछंती मंचेरे विभिन्न इंडस्ट्री लीडर एसआरएफ रो सीएमडी आशीष भारत राम महाशय, एप्सिलॉन रो सीईओ श्री गौरव माथुर महाशय, बजरंग गोयल डायरेक्टर बजरंग स्टील,
ग्रीनप्लाई रो सीएमडी श्री राजेश मित्तल महाशय, शोभा सोलार रो सीएमडी डॉक्टर सुब्रत मुखर्जी महाशय एवं आज कार्यक्रम रे मध्य उपस्थित अछंती हमर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज श्री हेमंत शर्मा महाशय, इपिकल एमडी तथा कमिश्नर कम सेक्रेटरी श्री भूपिंदर सिंह पुनिया महाशय, आमर एमडी इडको तथा कमिश्नर कम सेक्रेटरी एमएसएमई श्री प्रशांत रेड्डी महाशय एवं उपस्थित समस्त इंडस्ट्री लीडर विशिष्ट व्यक्ति विशेष माने सांबादिक बंधुगण, आज आम समस्तंक पई एक अविस्मरणीय मुहूर्त ओडिशा शिल्प इतिहास रे आज एक नूतन अध्याय आज जोड़ी है। महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद रु देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन एवं मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व रे आज 1 वर्ष 3 मास मध्य आम राज्य रे पंचम थर पई आज विभिन्न शिल्प प्रकल्प गुड़िकर शिलान्यास कार्यक्रम आज अनुष्ठित है। मान्यवर मुख्यमंत्री कर कमल रे आज झारसुगुड़ा, गंजाम, खोर्धा, कोरापुट, रायगड़ा, अनुगुल, सुंदरगढ़, भद्रक, पुरी, कटक, जाजपुर, संबलपुर भली राज्यर 12टी जिल्ला रे केमिकल, रेयर अर्थ मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट, फेरो अलाइड, टूरिज्म, टेक्सटाइल एंड अपैरल, प्लास्टिक, एग्रो प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल एंड सीमेंट डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम आदि क्षेत्र रे आज पाखापाखि 25,380 कोटी टंका पुंजी निवेश विनिमय रे 27टी प्रकल्पर मान्यवर मुख्यमंत्री कर कमल रे आज भित्तिप्रस्तर स्थापन करागला। यह द्वारा राज्य रे पाखापाखि 52,000 निजुक्ति सुजोग मध्य सृष्टि हो पारिबो। आम राज्य रे शिल्प प्रगति पई यह एक निश्चित भाव में ऐतिहासिक सफलतार मुहूर्त। यह मध्य स्पष्ट दर्शाउची डबल इंजिन सरकार रे ओडिशा शिल्प क्षेत्र रे किभली भाव में अग्रगति होउची। बंधुगण, जेकोसी सकारात्मक परिवर्तन एक महत्व चिंताधारा और उत्तम दृष्टिकोण रु ही आरंभ होता है। जदि आपण माने देखिबे आम राज्य रे मान्यवर मुख्यमंत्री नेतृत्व रे आम राज्य उदित सूर्य किरण रे धीरे धीरे आलोकित होबाकू जाउछि। जदि देखिबे आम सरकार आसिला परठारु जेउ भली भाबरे निरविच्छन भाबरे प्रति मासे 2 मासरे विभिन्न शिल्पर आमे शिलान्यास करिवार सफल होउछु। ये निश्चित भाबरे मान्यवर मुख्यमंत्री नेतृत्व रे आम राज्य रे उदित सूर्य रे आलोकीकरण होबाकू आम राज्य धीरे धीरे जाउछि एवं आमर लक्ष्य अछि 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन करिवा एवं 2047 विकसित भारत रे विकसित ओडिशार सुनिश्चितता करिवा ये होछि आमर लक्ष्य। एही संकल्प को साकार करिवा पई मान्यवर प्रधानमंत्री जो पूर्वोदय मिशन से पूर्वोदय परिकल्पना को वास्तव रूप दबा पई ओडिशा को शिल्प समृद्ध भावे गढ़ी तोलिबा पई आम सरकार ये होछि प्रतिबद्धता। आजिर ये समारोह होछि डबल इंजिन सरकार सफल नीति, सुदक्ष प्रशासनिक व्यवस्था और शिल्प अनुकूल परिवेश ये होछि निछक प्रमाण। आपण माने समस्ते एटी देखिथिबे जो इन्वेस्टर माने एटी तांकर वक्तव्य रखुथिले बा शेयरिंग करुथिले तांकर व्यूज से मान्यवर मुख्यमंत्री को ऊपर तांकर जो भरोसा ओडिशार प्रशासनिक दक्षता उपरे तांकर जो विश्वास से कारणरू आज इन्वेस्टर माने ओडिशा को इन्वेस्ट करिवा पई मन बळौचंती। आमर सरकार गोटे नीति उपरे आमे विश्वास करू आम राज्यर सामग्रिक विकास। तो सामग्रिक विकास किभली भाव में हम समग्र राज्यर सबु जिल्लार समान भाव में विकास हेले आम राज्यर सामग्रिक भाव विकास हम। आपण जदि आज देखिबे आज ये होछि तार निछक प्रमाण। पूर्वरु पश्चिम पर्यंत उत्तरु दक्षिण पर्यंत सबु आड़े आपण देखिबे आम राज्य रे सबु स्थान रे सबु जिल्ला रे आज ये गोटे जोग्राफिकाली आज शिलान्यास करागला विभिन्न शिल्पर। आमर लक्ष्य अछि मान्यवर मुख्यमंत्री मध्य सबु बेले कहंती आम राज्य रे एमिति को जिल्ला रहिबनी
जो जिले में शिल्प प्रतिष्ठा ही नथिबो समस्त जिले में शिल्प प्रतिष्ठा हबो शिल्प विहीन जिला आम राज्य में रहिबो नाही। बंधुगण चलित वर्ष जानुआरी मासरे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव आयोजन करा जायतिला 593 प्रस्ताव आसीतिला 16,73,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट इंटेंट आसीतिला जोथि पई ए जो कनक्लेव भव्य हेतिला एवं ऐतिहासिक हेतिला ओडिशा रे सर्वकालीन रेकर्ड मध्य करितिला एवं याकू मध्य किछि लोक मध्य कटाक्ष करुथिले जे ए जो इन्वेस्टमेंट इंटेंट आसीछि बा एमओ आसीछि एमओ रे रहि जिवो। माननीय मुख्यमंत्री आपण माने समस्ते वीडियो देखुतिले माननीय मुख्यमंत्री कहउतिले आपण मानकू से वीडियो माध्यम रे वार्ता देले जे खाली आमी एमओ करिकि रहि जाइनु तापर ताकू परवर्ती फॉलोअप करिवा प्रतिदिन ताकू रिव्यू नबा प्रति मासेरे प्रति सप्ताह रे ताकू माइक्रो रिव्यू करिवा ये सब कार्य रे मध्य माननीय मुख्यमंत्री निजे निज तत्वावधान रे आकू सब करंती जहार प्रतिफलन आपण माने समस्ते देखुचंती खूब शीघ्र को भली भाबरे आज शिल्पपति माने ओडिशा को आसुचंती ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट करिया को मन बळौचंती। मु तार गोटे गोटे उदाहरण कहिबी आमे उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव रो 3 मास परे खोर्धा रे प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी कलु 5,770 कोटी टंकार 14टी भिन्न भिन्न प्रकल्प ग्राउंड ब्रेकिंग करा गला एवं द्वितीय रे मे मासरे तार 1 मास परे मे मासरे 16टी प्रकल्प 1,14,000 कोटी ऊर्ध्व टंकार शिलान्यास बा उद्घाटन करागला जाजपुर जिल्लार कलिंग नगर ठारे। तापर 1 मास परे जून मासरे तृतीय थर पई ढेंकानाल रे 4,000 कोटी टंकार भित्ति प्रस्तर स्थापन करागला माननीय मुख्यमंत्री कर कमल रे। चतुर्थ थर आमे गंजाम जिल्ला रे 28,120 कोटी टंकार पुंजी निवेश रे 12टी प्रकल्प भित्ति प्रस्तर स्थापन करागला एवं आज पंचम थर पई 12टी जिल्ला रे विभिन्न प्रकल्प माननीय मुख्यमंत्री कर कमल रे आज शिलान्यास करागला। जदि मोट उपरे आपण माने देखिबे उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव रो 8 मास भितरे 8 मास परे परे आमे 2,04,000 कोटी टंकार 85टी शिल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवा पई आम सरकार आज सफल होईछि बा सक्षम होईछि। एहा द्वारा समग्र ओडिशा रे 1,64,000 रु अधिक निजुक्ति संभावना सृष्टि करिवारे मध्य आम सरकार सफल होईछि। ओडिशार युवक मानकर आशा आकांक्षा पूरण करिवारे आम सरकार मध्य आगु को बढ़िछि। ओडिशार युवक मानकर जो आशा अछि जो आकांक्षा अछि ताकू पूरण करिवारे आम सरकार निश्चित भाव में सक्षम हब। माननीय मुख्यमंत्री जो विजन अच्छी 2047 सुधा आमे निजुक्ति जेतिकी दवा कथा निश्चित भाव में आम सरकार सफल हब। ये होची तार प्रतिफलन एवं आज जदि आपण मान देखिबे आमर भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक संपद सुदृढ़ भित्तिभूमि एवं व्यावसायिक अनुकूल नीति माननीय मुख्यमंत्री उपरे भरोसा करी आज ओडिशा को निवेशक माने आसुचंती निवेश करिवा पई खाली आसुनांती ओडिशा को एबे प्रथम पसंद भाव में निवेशक माने बाछि सारिचंती। एक कथा आमे कहूनु जदि आपण माने देखिबे सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE रो तथ्य हिसाब रे आम राज्य चलित वर्षर प्रथम क्वार्टर रे आम राज्य 2025-26 आर्थिक वर्ष रे पाखापाखि 3,50,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश सारा भारत वर्ष को आसीथिबा बेले आम राज्य 1,40,000 आम राज्य को 1,40,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश आसीथिला जहा 40% सारा भारत वर्ष रे ये सूचाउची आम राज्य किबळी भाव रे शिल्पपति मानकु आकृष्ट करूची। ये होची तार प्रतिफलन। एहा द्वारा उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव परे आमे HLC सिंगल विंडो रे जो क्लियरेंस देइचु तादरे मध्य 5,70,000 कोटी टंकार 63 शिल्प को सिंगल विंडो रे मध्य आमे 41,283 कोटी 192टी प्रकल्प को मध्य आमे अनुमोदन दे सारिचु। ये सब को देखिबे आम सरकार बा आम विभाग केउ भली भाव रे काम करूची आपण माने समस्त जानि परुथिबे। एबे खाली आमे इंडस्ट्री आनिबा कि सेमानकु किभली भाव रे इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स दरकार ता पई मध्य आम सरकार काम करूची किभली भाव रे इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स बनेबा ITI पॉलिटेक्निक आहुरी आधुनिकीकरण करी सेटू जो युवक माने आमर बाहरिबे तांकू दक्ष करैबा तांकू सशक्त करैबा विभिन्न स्थान रे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रतिष्ठा करबा। आजिरो इंडस्ट्री जो न्यू एज इंडस्ट्री आसुची
ताकू किभଳି भाबरे आम ओडिया युवक माने सेथिपई दक्ष हेबे या उपरे मध्य आम सरकार विभिन्न प्रकार योजना देई मध्य काम करूछि। तत्सहित एफडीआई पार्क प्रतिष्ठा करिबा, फूड प्रोसेसिंग जोन, टेक्सटाइल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब गुड़िकर मध्य सामंतराल भाबरे विकास करिबा पई आमे मध्य ता पई प्रयास करूछु एवं गोटे इकोसिस्टम सृष्टि करिबा पई मध्य आम सरकार निरंतर भाबे काम करूछि। ओडिसा रे शिल्प अनुकूल वातावरण सृष्टि करिबा पई आम सरकार समर्पण भावना और आपण मानकर समर्थन जोगु आम राज्य शिल्पोन्नत राज्य रे परिणत हेबा पई जो यात्रा आरंभ करिछि निश्चित भाबरे आपण मानकर समस्तंकर मध्य सेथिरे सहयोग और समर्थन रहिछि। राज्य रे आमे केवल शिल्प प्रतिष्ठा करूनाहु बरम भविष्य पीढ़ी पई विकास पथ को प्रसारित करूछु एवं आज ये जो भव्य समारोह रे आपण माने समस्ते आज एटी उपस्थित रहिले एवं जो इंडस्ट्री लीडर माने आज एटी उपस्थित रहिले एवं माननीय मुख्यमंत्री को सेमाने प्रूव करेले जे किए केते एम्प्लॉयमेंट तांको शिल्प संस्था रे दउचंती ये भी मध्य एक नूतन भाबरे आज एक कार्यक्रम हैला। मु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दउची, कृतज्ञता ज्ञापन करूची। आपण मानको द्वारा निश्चित भाबरे ओडिया युवक मानकु रोजगार दबारे आम सरकार सक्षम हैला एवं माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व रे आज आम विभाग आम सरकार आगु को बढ़ुची एवं आ पूर्व आमर एसीएस इंडस्ट्री कहते जे कथा देई कथा रखिले मोहन सरकार सृष्टि हैला नुआ रोजगार। आज माननीय मुख्यमंत्री जो सबु बेले विजन थिला किभଳି भाबरे ओडिसा रे अधिक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हबो, ओडिया लोक माने चाकरी पाइबे। आज से स्वप्न मध्य पूरा हवा को जाउची। ओडिसा रे सेही भली इंडस्ट्री ओडिसा रे प्रतिष्ठा होची। आज भी देखिबे आपण माने जो सब इंडस्ट्री हैला सेतिरे अधिक रु अधिक सेतिरे नियुक्ति संभावना मध्य सृष्टि हेई पारिबो। आज रे कार्यक्रम को आसीथिबा समस्त अतिथि मानकु समस्त इंडस्ट्री लीडर इंडस्ट्री कैप्टेन एवं विशिष्ट व्यक्ति विशेष माने समस्त को धन्यवाद दे मो वक्तव्य को सांग करछि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। अशेष धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपनकर प्रेरणादायी शब्द पाई। वर्तमान कार्यक्रम रे आमे समस्त मिसी साखी हेबा को जाउछे एक सुंदर निदर्शन जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय निज कर कमल रे करिवे शिल्पीय प्रगतिर प्रतीक फाउंडेशन स्टोन प्लेक रो अनवेलिंग करिवे। आपण समस्त अनुरोध करबी जोरदार करताली देबे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करबी मंचर डाहान पार्श्व को आसीबे अतिथि मानक सहित। Time has arrived for unveiling of foundation stone plaque by Honorable CM of Odisha. SRF Limited, Epsilon Carbon, Shri Bajrang Power Metallics, Green Ply Group, Sobha Solar, Ferro Alloys Corporation, MS India Clothing Private Limited, Linde India Limited, Ultratech Cement Limited, Hindustan Aqua Private Limited, S&M Hotels and Resorts Private Limited, Suma Real Media Private Limited, Supreme Industries Limited, Adhistam Ventures Private Limited, ITC Limited, Hotel Paul Regency Private Limited, SAPL Industries Private Limited, 3 Pathaga Textiles, Big International, Amrita's Healthcare, Kesav Plastic, Mediate Marketing Services Private Limited, Mediate, Joshun Service Refractories Private Limited, Jai Bharat Spices Private Limited, Linde India Limited, Indian Metal and Ferro Alloys, Imphal Limited, Mowgli Labs India Private Limited. धन्यवाद अतिथिगण निज निज स्थान रे बसिबा पय विनम्र अनुरोध करिबी। शिल्पीय प्रगतिर नुआ अध्याय को प्रतिबिंबित करुवा विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास स्थापना संबंधित दृश्य चित्र वर्तमान आपण को सामने प्रदर्शित हेबो। अनुरोध करबी कंसोल को वीडियो टी प्ले करिया पय। A video on ground breaking of industries. ओडिशा अपार संभावनार राज्य, अनन्य खनिज संपद, दक्ष मानव संबल और अत्याधुनिक भित्तिभूमि आम राज्यर विशेषता। एहाको आधार करी
नूतन तथा समय उपयोगी शिल्प प्रतिष्ठा उपरे प्राथमिकता देउछन्ति राज्य सरकार। भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रेरणादायी मार्गदर्शन एवं ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी बलिष्ठ नेतृत्व रे शिल्प समृद्ध राज्य रे परिणत हेउछि ओडिशा। राज्य सरकार स्वतंत्र शिल्प नीति, बलिष्ठ लैंड बैंक योजना एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी भली अभिनव पदक्षेप फल ओडिशा आज देश विदेशर निवेशकों पलटिछि आकर्षण। फल राज्य रे द्रुत शिल्पायन पई अनुकूल परिवेश सृष्टि हेउछि। आज ओडिशार 12टी जिल्ला रे 27टी प्रकल्प पई भित्ति प्रस्तर स्थापन करा जाउछि। भित्ति प्रस्तर स्थापन हेउथिबा प्रकल्प गुड़िक एसआरएफ लिमिटेड रो केमिकल्स एंड केमिकल उत्पादन प्रकल्प, एप्सिलॉन कार्बन अशोका प्राइवेट लिमिटेड रो केमिकल्स एवं केमिकल उत्पादन प्रकल्प, श्री बजरंग पावर एंड मेटालिक्स लिमिटेड रो रेयर अर्थ मिनरल्स प्रकल्प, एमएएस इंडिया क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड रो कपड़ा और पोशाक उत्पादन प्रकल्प, सुमा रियल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड रो औषध उत्पादन प्रकल्प, आईटीसी लिमिटेड रो पर्यटन प्रकल्प, आदिस्तम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रो कपड़ा और पोशाक उत्पादन प्रकल्प, त्रिपातका टेक्सटाइल्स रो कपड़ा और पोशाक उत्पादन प्रकल्प, बीके इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड रो कपड़ा और पोशाक उत्पादन प्रकल्प, अमृतास हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड रो औषध उत्पादन प्रकल्प, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड रो सीमेंट उत्पादन प्रकल्प, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड रो प्लास्टिक उत्पादन प्रकल्प, मेडिएट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रो प्लास्टिक उत्पादन प्रकल्प, जय भारत स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड रो खाद्य पानीय और आनुषंगिक शिल्प, एसएनएम होटल एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रो पर्यटन प्रकल्प, होटल पॉल रिजेंसी प्राइवेट लिमिटेड रो पर्यटन प्रकल्प, एसएपीएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रो कपड़ा और पोशाक उत्पादन प्रकल्प, ग्रीन फ्लाई ग्रुप रो कागज काठ और वनजात द्रव्य उत्पादन प्रकल्प, शोभा सोलार लिमिटेड रो सबुज शक्ति उत्पादन प्रकल्प, मोगली लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रो डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम प्रकल्प, फेरो एलॉयज कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो स्टील उत्पादन प्रकल्प, लीडे इंडिया लिमिटेड रो अम्लजान एवं अन्य गैस उत्पादन प्रकल्प, चोसुन सर्विस फैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड रो स्टील उत्पादन प्रकल्प, हिंदुस्तान aqua प्राइवेट लिमिटेड रो खाद्य पानीय और आनुषंगिक शिल्प, केशव प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रो प्लास्टिक उत्पादन प्रकल्प, लिंडे इंडिया लिमिटेड रो अम्लजान और अन्य गैस उत्पादन प्रकल्प, इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड रो कृषि प्रक्रियाकरण प्रकल्प। राज्य रे नुआ सरकार आसीबा परे शिल्प क्षेत्र को नुआ गति मिली। गंजाम सहित खोर्धा जिल्लार हलदियापड़ा, जाजपुर जिल्लार कलिंग नगर एवं अन्य जिल्ला रे विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और भित्ति प्रस्तर स्थापन करा जायछि। आज मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कर कमल रे आउ 27टी प्रकल्पर शिलान्यास करा जाउछि। एही सब प्रकल्प पई विनियोग होउछि 2,04,185 कोटी टंका। एहा द्वारा सृष्टि हेबो 1,63,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग। कथा देई कथा रखिले लोकंक सरकार, सृष्टि हेला नुआ रोजगार। जोरदार करताली ओडिशावासी को हृदयपूर्ण धन्यवाद। वर्तमान कार्यक्रम सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पर्याय जहां को सुनिवा पई आपण माने समस्त आम सहित अपेक्षा करिसेंती। विकसित ओडिशार स्थपति, शिल्पीय प्रगतिर पथ प्रदर्शक एवं आजिर गरिमामय अवसर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्री मोहन चरण माझी महोदय को जोरदार करताली देवा विनम्र अनुरोध करुछि। तांकर मूल्यवान उद्बोधन पई हृदयपूर्वक आमंत्रण करुछि। जोरदार करताली टिके आशा करबी समस्त ठारू। जय जगन्नाथ। आज
ओडिशार विकास क्षेत्र रे विशेष भाव में शिल्पायन क्षेत्र रे निश्चित भाव में एक ऐतिहासिक ये दिन होगापाई जाऊँगी। आज शुभ अवसर रे 12टी जिले में 27टी शिल्प प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन यही अवसर में आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा माननीय मंत्री शिल्प और दक्षता विकास श्रीयुक्त संपद चंद्र स्वाई महोदय, उपस्थित थिबा मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, शिल्प विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा, उपस्थित शिल्पपति बंधुगण, एटी उपस्थित थिबा समस्त प्रिय भाई और भौणी माने एवं गणमाध्यम प्रतिनिधिगण, आभासी जरिया ये कार्यक्रम रे उपस्थित रही ए कार्यक्रम रे सहयोग करुथुबा गंजाम, झारसुगुड़ा, कोरापुट, अनुगुल और खोर्धा ठारे उपस्थित थिबा मान्यवर सांसद एवं विधायकगण, मान्यवर सांसद आस्का श्रीमती अनिता शुभदर्शनी पट्टनायक महोदया, मान्यवर विधायक छत्रपुर श्रीयुक्त कृष्णचंद्र नायक महोदय, मान्यवर विधायक ब्रह्मपुर के अनिल कुमार महोदय, मान्यवर विधायक कविसूर्यनगर श्रीयुक्त प्रताप चंद्र नायक महोदय, मान्यवर विधायक अनुगुल श्री प्रताप चंद्र प्रधान महोदय, मु आपण मानकु समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। ता सहित एठी ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SRF लिमिटेड मिस्टर आशीष भारत राम, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिस्टर राजेश मित्तल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शोभा सोलार लिमिटेड डॉक्टर सुब्रत मुखर्जी, डायरेक्टर बजरंग पावर एंड मेटालिक्स लिमिटेड मिस्टर बजरंग गोयल, CEO एप्सिलॉन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर गौरव माथुर एवं एटी उपस्थित अन्य समस्त आमर शिल्पपति बंधुगण, मु आपण मानकु पुनर्बार आउ थे अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँगी। वेलकम टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। टुडे we are starting a journey of mutual growth, fruitful partnership and unbound prosperity in the land of opportunity, Odisha. This is going to be a momentous occasion for both the people of Odisha and for the investors present here. Aji राज्यर शिल्प इतिहास रे निश्चित भाव में आउ एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ी होगापाई जाऊँगी। आज गोटे दिन रे आम राज्यर 12टी जिले में 27टी शिल्पपाई भित्ति प्रस्तर ए कार्यक्रम आज करा जायछि। एही जिला गुड़िक होउछि गंजाम जिला, झारसुगुड़ा, खोर्धा, कोरापुट, अनुगुल, भद्रक, सुंदरगढ़, कटक, पुरी, जाजपुर, रायगड़ा और संबलपुर 12टी जिला आज नुआ भाव में जोड़ी होती एवं आगुरी ये जिला मान भितर ये जिले में भी अनेक प्रकल्प आसी सारी।
या पूर्वर अनेक जिले में प्रकल्प विभिन्न प्रकार प्रकल्प गुड़िकर ले ऑफ स्टोन बा भित्तिप्रस्तर स्थापना हो सारी आम ओडिशा रे प्रतिष्ठित थिबा 30 जिला मध्यरु 3टी जिला को केवल छाड़ीदेले बाकी 27 जिले रे विभिन्न प्रकार शिल्प प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापना हो सारी आज को मिसेला 27 जिला को टच कर निश्चित भाव में आपण मैंने अनुमान करें किभली भाव आम ओडिशा रे पुंजी निवेश करने पुंजी निवेशकारी मानकर आगमन एवं आमे जो पॉलिसी आज आपणईचु से पॉलिसी को ग्रहण करी ओडिशा एक संभावनार राज्य जहाँ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते ताकू साकार करने आज आमे बहुत निकटतर हो पारिछु एवं आज मध्य ताकू ग्राउंड ब्रेकिंग करि पारिछु। विशेष करके आज ये कार्यक्रम नेला परे पूर्व ओडिशा रु पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा यही भली भाव में राज्यर प्रत्येक अंचल को एक तृतीयांश रु अधिक अर्थात आजिर केवल 12टी जिला आमे अधिक जो शिल्पायनर योगदान करवा क्षेत्र में बड़ भूमिका निया जाई पारिछि एवं यही प्रोजेक्ट गुड़िक आज जो गुड़िक आम कर सक्षम होइछु से गुड़िक हूँ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट बयन शिल्प फार्मा केमिकल्स यही भली भाव में अनेक हाई भैल्यू सेक्टर रो ये शिल्प समूह आगामी 1.5 वर्ष भितर 2 वर्ष भितर सबु प्रकल्प गुड़िक ताहार आज जमती आम तार भित्तिप्रस्तर स्थापना आज करिसंती आपण मानकर उपस्थिति रे से दिन आम तार शुभारंभ हेब आम ताको लॉन्चिंग ये कार्यक्रम को बा ये प्रोजेक्ट को आम करई परिबा। ये जो 27टी प्रकल्प आज भित्तिप्रस्तर तार स्थापना करागला एथिरे 25,000 कोटी टंका विनियोग करा जाउछि। एहा द्वारा प्राय 52,000 युवक युवती नियुक्ति सुजोग सृष्टि हवा एक प्रकार सुनिश्चित हो जाइछि। एठारे मु गोटिए कथा कहवा को चाहे जे गोटिए कारखाना केवल एक प्रकल्प नुहे एक निश्चित भाव में कह जाई पारिबो एक विकासर प्रतीक। एणु आमे यह को जदि देखिबा ताले निश्चित भाव में गोटे निजुक्ति एटी अनेक आमर छात्र छात्री माने उपस्थित अछंती जो माने विभिन्न कॉलेज रे विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट रे सामाने अध्ययन करुछंती। ये निजुक्ति जते बेले सामाने गोटे पाइबे और सेही परिवार रो किबळी भाव में भाग्य परिवर्तन होउछि। आउ आज जेतिकी आमे युवक युवती को आज निजुक्ति आम शिल्प उद्योगी मानकर माध्यम रे करई पारिछु सरकारी स्तर रे मध्य करई पारुछु। या को जदि देखिबा ताहले निश्चित भाव में ओडिशार आम ओडिया युवक युवती मानकर भाग्य आगामी दिन में आहुरी उज्जवल होउछि। आहुरी मध्य आमे संपूर्ण भाव में जहाँ कमिटमेंट देइछु ताकू पूरण करिया पई मध्य जाउछु। आ यही होउछि आम ओडिशार युवक युवती मानकर पई भाग्य परिवर्तन गोटे बहुत बड़ सूचक। यह तो निश्चित भाव में समस्त खुशी आणिबो एवं समस्त जीवन में बहुत बड़ गोटे सौभाग्य मध्य आनीदेव। आउ गोटे कथा हूँ जिते बड़े ओडिशा को किसी निवेश आसुछि सेते बड़े ओडिशा प्रति सारा भारतर एवं सारा विश्वर जो शिल्प जगत अच्छी ये शिल्प जगत प्रति गोटे बहुत बड़ भरोसा ताहा वृद्धि हो पारुछि आम ओडिशा सरकार द्वारा एवं आमे जो पॉलिसी आनिया पई जाउछु एवं जहाँ करूछु ता उपरे लोकंकर उद्योगी मानकर बहुत बड़ गोटे भरोसा आज आमे तैयारी करि पारिछंती। सेटा आज ताहार वास्तविक जो ग्राउंड ब्रेकिंग करने द्वारा संभव हो पारिछि।
शिल्प स्थापना ओडिशा सरकार आमर जो नीति एवं आमर जो निष्ठा आमर जो उद्यम एठी आमे 6 मास पूर्व कौन कही वर्षे पूर्व आमे कौन कमिटमेंट करूँ एवं गोटे वर्ष पर आमर कमिटमेंट अनुसार आमे ताकू प्रकृत में कार्यकारी करूँ ना केवल एमओयू साइन करी आमे सीमित रहीगलु ये कथा को जदि आमे देखिबा ताहले आपण माने जानी पारुथिबे आजिर ये ग्राउंड ब्रेकिंग माध्यम रे ही जे किभଳି भाबरे आमे आमर निवेशकारी मानकु उद्योगी मानकु एठी डाकी आनिबा निर्दिष्ट समय सीमा भितरे ताकू ग्राउंड ब्रेकिंग करैबा एहा करिबा द्वारा आज आशा भरोसा सहित निवेशक मानकर आस्था आज बहुत वृद्धि पाई पारिछि एवं केवल गोटे जिले में नुहे सबु जिले में शिल्प प्रतिष्ठा करने समावेशी हेब आमर राज्यर प्रगति आउ याकू आधार करिकरी आमे सबु अंचलर समस्त जीवन में पॉजिटिव चेंज आसी पारिबो और से दिगरे आमे प्रतिश्रुति पालन करूछु एवं आगामी दिन में मध्य निश्चित भाव में ताकू आमे करि चलिबु। एहा पूर्वरु आपण माने देखुथिबे जेते बेले पूर्व सरकार मानकरे पूर्व सरकार रे इंडस्ट्री आनिबा पाई मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव रो प्रथम संस्करण द्वितीय संस्करण एभली भाव में अनेक कार्यक्रम करा जाइथिला सेथिरे गोटिए केवल फोकस करा जाउथिला जेहेतु आम ओडिशा रे खणी अछि आमे खणी भित्तिक शिल्प प्रतिष्ठा करिबा स्टील एवं आमर मेटेरियल्स उपर आमे किछि शिल्प प्रतिष्ठा करिबा पाही प्रायतः बेसी मन बढ़ाई आउ सेथि पाई एतिरे खनिज पदार्थ भित्तिक जो ताकू उत्तोलन करा जिवो एवं इस्पात शिल्प करिबा सेथिरे अनेक एमओयू साइन कला परे आमे सीमित रही जाइथिले एमओयू ता बाटरे गला किंतु ग्राउंड ब्रेकिंग करिबारे आमे असफल हेले एणु एथिरे बहुत बड़ा गोटे आमे एथिरे परिवर्तन करिछु विभिन्न सेक्टर को नेइछु पाखा पाखी प्राय 16टी सेक्टर रे से स्टील भी रहिबो विभिन्न मटेरियल्स प्रोजेक्ट भी रहिबो ता सहित टेक्सटाइल आज अच्छी अपारेल अच्छी केमिकल्स अच्छी पेट्रोकेमिकल्स अच्छी प्लास्टिक पार्क आमे करूछु रिन्यूएबल एनर्जी करूछु होटेल पर्यटन इस समस्त कथा को आधार करी जेभली भाव में आज आमे कार्यक्रम करूछु फार्मासी ये समस्त को गुरुत्व देवा फल बहुत बड़ा गोटे मैन्युफैक्चरिंग हब हेबाई आज ओडिशा पूर्व भारत एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करने जाऊँ आउ से विभिन्न हाई भैल्यू प्रोडक्ट उत्पादन दिगरे निवेश मान को आकृष्ट आम ये करिपारिछु ताहार प्रमाण आज आपण माने समस्ते निजे मैन्युफैक्चरिंग भैल्यू चेन रे आहुरी ऊपर को उठी सारा विश्व बाजार रे कम्पीट करि पारुथवा भली प्रोडक्ट हमको निर्माण करिया पई पड़िबो आउ सेति पई आमे ताकू सुनिश्चित करिया पई जाउछु आम सरकार आसीबार मात्र ये 15 मास हेछि शासन दायित्व नेला परे अल्प समय मध्य आम सरकार 269 शिल्प प्रकल्प मंजूर करिसंती 5,60,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश आसिबा सहित 3,60,000 नियुक्तिर संभावना को सुनिश्चित करा जाइछि सबुठु बड़ कथा होची एही समय मध्यरे 84टी शिल्प प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर आमे स्थापना करि सारिछु 165 दिन मध्यरे आ एहा द्वारा ओडिशार 2 लाख कोटी रु अधिक टंकार पुंजी निवेश आज को मिसेला परे आमे ताकू कंप्लीट करि पारिछु आउ एथिरे 1,64,000 नियुक्ति सुनिश्चित करा जाई पारिछि एही तथ्यरु आपण माने जानि पारुथिबे जे आम सरकार रे शिल्प स्थापना पाई केते स्पीड ओ केउ स्केल रे आमे काम करूछु सेहि पाई एठी जेते बेले उपस्थापना करा जाउथला आमर शिल्प विभागर
अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा आपण पाखे कथा रखुले एठी जो आपण पाखे डिस्प्ले करिसंती प्रेजेंटेशन देइसंती सेतिरे स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस को आमे किभली भाबरे केते स्पीड रे आमे नउछु केते दिन भितरे कमिटमेंट अनुसार आमे करि पारुछु ना नाही एवं सेति पई से जते बेले एठी प्रेजेंटेशन देले सेथिरे जो भयस रे दिल्ली रे मुंबई रे सुदूर सिंगापुर रे आमे कमिटमेंट देइथिलु सही स्पीड रे सही समय अवधि रे आमे आज ताकू ग्राउंड ब्रेकिंग करि पारलु कि नाही तार प्रमाण आज एठी आपण मानकर उपस्थिति रे करा गला स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस और ता सहित इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो कथा को आज एठी कुहा गला एवं ताहा सहित मध्य प्रति सेक्टर को 16 सेक्टर को आमे टच करिछु ता भितरे हला आपनकर सेक्टरल डाइवर्सिटी एवं रीजनल डाइवर्सिटी या को गुरुत्व देवा फल आज 27 जिला को आमे पहुंची पारिछु एवं आज प्राय 16 सेक्टर को आमे टच करि पारिछु ये होउछि ओडिसा रे शिल्प क्षेत्र रे एक ऐतिहासिक मुहूर्त और जहा को आज आमे संपूर्ण भाव रे अचीव करि पारिछु एहा सहित सबुठारु आ गोटे हेला बड़ कथा जे आमे ओडिया अस्मितार कथा को मध्य नैकरी आमे चालुछु ओडिया अस्मिता अर्थात ओडिसा रे शिल्प प्रतिष्ठा हब विभिन्न निवेशकारी माने ओडिसा बाहरु देश बाहरु आसीबे किंतु जो ओडिया माने भी अछंती जो माने आज उद्योगी हिसाब रे निवेशकारी हिसाब रे इन्वेस्टर्स हिसाब रे अनेक ओडिया भी अछंती ओडिसा बाहर अछंती विदेश रे अछंती आज सेमाने भी आम सहित ये ओडिसा रे प्रकल्प करिबा पई निष्पत्ति नेकी एठी आसीबा एवं ग्राउंड ब्रेकिंग करिबारे भाग नेबा ये तो आहुत बहुत गोटे आमर ओडिया अस्मिता जो आम शब्द रखीचु से बड़ चमत्कारिता आज आसी पारिछि एवं अनेक ओडिया निवेशकारी मध्य एठी आसिकरी पहुंची पारिछंती अनेक समय बड़ प्रश्न आसे आगामी 18 तारीख रु 25 तारीख पर्यंत विधानसभा चलिबो मनसून सेशन ये मनसून सेशन रे चलिबा समय अनेक लोक अनेक प्रश्न मध्य पचारि थांती जे एते शिल्प कारखाना प्रतिष्ठा होउछि केते ओडिया लोकंकु केते ओडिया युवक युवती मानंकु आपण चाकरी प्रदान करले ना अण ओडिया बाहरु आसिक लोकंकु चाकरी प्रदान करले आज ताहार तालिका एठी आम ये जो टीम आज करिकी ताकू आज एठी आपण मानकर पाखरे रखी छंती एवं समस्त निवेशकारी माने सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी देई छंती जे केते ओडिया लोकंकु एथिरे सुजोग दिया जाई पारिछि जो 77,894 जन लोकंकु नियुक्ति दिया जाइछि आज दिन को मिसेला परे एमानक भितरे 56,859 जन को ओडिया पिला मान को आमे नियुक्ति देबारे बहुत बड़ गोटे सफलता नेइछु आम ओडिया पिला मान को आमे देइछु ये होउछि तार प्रकृत प्रमाण एवं ताहार निदर्शन ये पाखापाखि प्राय 80% हम 80% पिला जदि आमे ओडिया पिला चाकरी देबा ताले निश्चित भाव में ओडिया अस्मिता कथा ओडियांक पाई काम करिबा एवं ओडिशा को आमे आमर पूर्व से ऐतिहासिक मुहूर्त को आमे पुणी आउ थे पुनर्जीवित करने सहित सामान को केमती प्रमोट करी आगु को नेबा ये गोटे बहुत बड़ मुहूर्त आज निश्चित भाव आम आसी पहुंची ओडिशार समृद्धि पाई आमर यही उत्साह पछरे रही आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशार विकास प्रति तांकर फोकस आज आमको जेभली भाव से आमको दिग्दर्शन दौरान उत्साहित करुँच एवं प्रतिटी मुहूर्त तांकरी कथा मने पड़ुछि से जेभली भाव आमको दिन राति काम करने जो प्रेरणा देइछंती उत्साह करछंती आमे काम करने आमको बहुत बड़ आज आमे से मुहूर्त को मने पकई आमे काम करुछंती मोदी जी होउछंती भारतर विकास पुरुष आत्मनिर्भर भारतर आलोकवर्तिका
एणु उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 रे निवेशक मानकु तांकर आह्वान जगु मने पकांतु एई सेप्टेम्बर मासर 17 तारीख रे से आसीथिले ओडिशा को तांकर जन्मदिन रे जन्मदिन पालन करिबा पई एई भुवनेश्वर जन्मदिन पालन करथिले गोटे आदिवासी परिवार रे गोटे आदिवासी माँ पाखरु खीरी खाई के जन्मदिन पालन करथिले से आसीथिले जनवरी मासर 28-29 तारीख रे एई वर्षर उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 अवसर रे एवं से भरोसा देइथिले आपण माननकु समस्त निवेशकारी को ये मोदी गारंटी है आप उड़ीसा आइए और उड़ीसा में आते हुए इन्वेस्टमेंट करिए ये संभावना की राज्य है निश्चित रूप से हम आपको गारंटी दे रहे हैं आज देखंतु तांकर कथा को भरोसा रखी आपण माने समस्ते आज एठी आमर पॉलिसी सहित आमर निष्पत्ति सहित आमर रियल टाइम सहित आपण मानकर सहित आलोचना माध्यम रे आज तार समाधान रो स्वप्न समाधान रो सूत्र बाहरला परे आमर स्वप्न को साकार करिबारे आपण गोटे बहुत बड़ भूमिका नहीं छंती एवं ए आह्वान जगु ओडिशा पुंजी आकर्षण रे पूर्वर जिते रेकर्ड थिला सबु रेकर्ड को आज भांगी देइछि मोदी जी आह्वान क्रमे आपण माने भांगी देइछंती ये होछि पूर्व दयर परिकल्पनार ओडिशा आज सर्वोच्च स्थान रे आज अधिकार प्राप्त आज हेई पारिछि मु आपण मान को सेथि पई ए सेप्टेम्बर मास को पुणी आउ थरे मने पकई दउछि गत सेप्टेम्बर मास रे मोदी जी आसीथिले जन्मदिन पालन करले चलित वर्ष कमिंग जो सेप्टेम्बर 17 तारीख रे आज होउछि सेप्टेम्बर 15 तारीख आउ गोटे दिन पर सेप्टेम्बर 17 तारीख मोदी जी जन्मदिन मोदी जी जन्मदिन पालन करिवो भारत वर्ष एवं पालन करिवो मध्य सारा विश्व से अवसर में विभिन्न प्रकार कार्यक्रम होउछि एवं तांको जन्मदिन अवसर रे मध्य मोदी जी प्रति ओडिशा प्रधानमंत्री श्रद्धा को जेभली भाव ओडिशा को भल पाउछन सम्मान देकरी आमे ओडिशावासी तरफ ओडिशा सरकार निष्पत्ति नहीं गोटे दिन रे आसंता 17 तारीख रे आमे निष्पत्ति नहीं गोटे दिन रे 75 लाख गछ लगेवा पई आमे निष्पत्ति नहीं 75 लाख प्लांटेशन एक दिन में होगा ये प्रकार निष्पत्ति जो नहीं यह निश्चित भाव में भावुची ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रे स्थान पाइबा पई आमे भूत जाउछंती आज एवं एथिरे हेबा आपण मान समस्तंकर सहयोग रे मु आपण मान को भी सहयोग रो भूमिका नेबी कारण शिल्प एवं उद्योग रो बहुत बड़ एथिरे भूमिका अछि आमे तांकु भी अनुरोध करिछु एवं सबु शिल्प प्रतिष्ठान मानकरे आपण माने जेते पारु पर्यंत आपण माने टार्गेट करी करी आपनकर एमिति भी शिल्प रे जोठी करिया पई जिवे से कैंपस भीतर 33% आपण ग्रीनी करिबा पई मध्य ये पॉलिसी भीतर थिबा कारणरू आपण माने मध्य जेते गछ लगेई छंती आवश्यकता आउ जेतिकी गछ अछि आपण मानकर लगेया पई चारारोपण करिया पई मु आपण मान को निश्चित भाव रे अनुरोध करूछि विकास और परिवेश ये निश्चित भाव रे परस्पर परिपूरक आउ एभली हिसाब रे मध्य कार्य करिवार बहुत आवश्यकता अछि एणु निश्चित भाव रे ओडिशार शिल्प स्थापना पाई उपयुक्त नीति सहित प्रत्येक क्षेत्र को स्वतंत्र प्रोत्साहन मध्य आमे प्रदान करि चालिछु आगरु ओडिशा रे किभली भाव रे शासन चालुथिला आपण माने जो माने ओडिशा सहित संपर्क रखिछंती निश्चित भाव रे जानिथिबे केवल शासन अर्थ लोकन को न्याय देवा नाहारे केवल गोटे बहाना करी व्यवस्था रे बहुत बड़ गोटे स्वतंत्रता एभली दिया जायतला ब्यूरोक्रेटिक शासन थिला जो थिरे कि प्रकृत लोकन को विकास रास्ता रे पहुंचेबा पई बहुत बड़ गोटे प्रतिबंधक थिला आ सेति पई सरकारी व्यवस्था रे ब्यूरोक्रेटिक प्रतिबंधक को आज हटा जाइछि आ सेति पई आज ओडिशा सारा देशर निवेश क्षेत्र रे आकर्षण ये गोटे बहुत बड़ केंद्र मध्य हो पारिछि सबुठ बड़ कथा होछि ओडिशा सरकार उपरे निवेशक मानकर विश्वास आ भरोसा आपण मानकर जो भरोसा आज आसीछि आउ सेथिरे आपण माने जेभली भाव रे सहयोगर हाथ बढ़ेइछंती
ए समय रे आम सरकार एवं आम समस्ते आपण मान सहित सांगरे अच्छु एणु निश्चित भाव में यही भरोसा को लेकर आपण माने लंबा समय धरिक ये इन्वेस्ट करंतु एथिरे निश्चित भाव में आपण मान समस्तंकर एवं ओडिशार सर्वांगीन विकास आगामी दिन पर्यंत आम नहीं पारिबा। मेरे प्यारे उद्योगी मित्रों, ओडिशा संभावनाओं की भूमि है। ये देश का एकमात्र राज्य है जहां आपको उद्योग अनुकूल हर प्रकार की सुविधाएं निश्चित रूप से जरूर मिलेगा। ओडिशा में देश की दूसरा सबसे बड़ा खनिज है। ओडिशा में 3 बड़ा बंदरगाह है, 2 बड़े एयरपोर्ट है, हमारे यहाँ सरप्लस पावर भी है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये पक्के सड़कें और जातीय राजपथ है और कुशल मैन पावर भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ओडिशा में एक स्थिर सरकार है और मुझे कहने की कोई संकोच नहीं है कि ओडिशा एक शांतिप्रिय राज्य भी है। हमारी सरकार आने के बाद उद्योग के लिए उद्योग अनुकूल बहुत सारे फैसले लिए हैं, बहुत सारी नीति में बदलाव लाए हैं। राज्यों में उद्योग प्रतिष्ठा के लिए आपको और क्या चाहिए? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि उद्योग निर्माण के लिए दूसरे राज्य जो भी सुविधा देंगे हम भी उतना या उससे ज़्यादा सहूलियत आपको देंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है। आप एक कदम चल के देखिए, हमारी सरकार आपके साथ 2 कदम चलेगी, ये निश्चित। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का वही बात दोहराता हूं जो उन्होंने उत्कर्ष ओडिशा के समय पे आप सबसे साथ उसी दिन में वो बोले थे, ओडिशा में निवेश करने के लिए यही समय है, सही समय है। कम इन्वेस्ट इन ओडिशा, टुडे इट इज प्रूव्ड। ओडिशा रे शिल्प प्रतिष्ठा करिया पई आमे व्यापक भित्तिभूमि आमे निर्माण करिछु। पारादीप पीसीपीआरआई, बालेश्वर प्लास्टिक पार्क, 6टी जिले में टेक्सटाइल पार्क, विभिन्न स्थान में मेगा फूड पार्क आदि स्थापना करा जाइछि। प्रतियोगितामूलक मैन्युफैक्चरिंग पई यही भित्तिभूमि गुड़िक एक उन्नत इकोसिस्टम सृष्टि करि पारिछि। आमर वर्ल्ड स्किल सेंटर विश्वस्तरीय स्किल ट्रेनिंग कुआ जाउछि। ओडिशा रे विभिन्न पॉलिटेक्निक, आईटीआई एवं विभिन्न प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मानकरे हजार हजार युवक युवती को आधुनिक ट्रेड रे आमे प्रशिक्षण देवा आरंभ करिछु। आमर पिला माने एबे संपूर्ण भाव में इंडस्ट्री रेडी। ओडिशा को जो शिल्प आसीबो सेमानंकर पाई दक्ष युवशक्ति आज संपूर्ण भाव में प्रस्तुत हो अछंती एवं ताकू आमे सुनिश्चित करिया पे जाउछु। शिल्प क्षेत्र में आमर यही अभियान मूल क्षेत्र होउछि आपण मानकर सुंदर भविष्य पाई आमे यही शिल्पायन अभियान आरंभ करिछु। ओडिशार युवक युवती मान को दक्षता हासिल करिवा पाई एठी बाहर को जीवा पाई पड़िबो नाही, तार व्यवस्था आज राज्य रे ही करा जाउछि। यही ओडिशा माटे रे आपण मान को सब सुजोग मिलिबो एवं ए असरंती सुजोगर भूमि आज ओडिशा मध्य हवा पाई जाउछि। मोदी जी विकसित भारत 2047 लक्ष्य ये पूरण करिबा ये निश्चित भाव में आगामी दिन में बहुत बड़ा गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। एठी गोटिए कथा आमर मुख्य शासन सचिव आपण मानकर पाखरे किछि कथा रखुथिले, से कथा मु कोठी ना कोठी गोटे कहिथिली आ ताकू आज एठी आपण मानकर पाखरे उपस्थापना करिथिले। से कहिथिले जे आम लोक माने आम ओडिया माने भी केबे भी तांकर सोच रे तांको ब्रेन पाठ पढ़ा जहाँ भी होता है ना कहीं छोट ब्रेन रे मध्य बहुत बड़ वैज्ञानिकता भावना रखिकी नुआ जिनस निजे तैयारी करी आग को सामना को आनिबा पाई
केबे भी पछघुंचा देई नाहंती। एटी कहूतिले जड़े मो केन्दुझर जिलार जो कथा मु कही ताकर ना हूँ निर्मल महांत। से गोटे मेकानिक बहुत बड़ पाठ पढ़ी नाहंती किंतु तांकर बहुत बड़ सोच थिला एवं वैज्ञानिक मनोभाव थिला। से स्कूल जाउथवा समय रे आज को 45 वर्ष पूर्व 45 इयर्स एगो से जेते बड़े विद्यालय को जाउथिले सेते बड़े डायनामा साइकिल सब चालुथिला। से डायनामा लगी साइकेल रे से तांकर टेप रेकर्डर को से फिटिंग करी निजे जाइकी स्कूल को जाउथिले गीत सुनी सुनी। से जेते परवर्ती पर्यायर रेडियो मेकानिक हेले से रेडियो मेकानिक हेकी रेडियो सब रिपेयरिंग करवा खोलिबा जॉइंट करवा बनैबा केमिति माने रेडियो स्टेशन तैयारी हेची ता ट्रांसमिशन केमिति अछि मु काहे की करि परिबे नाही से निजे तैयारी करले। केन्दुझर जिलार ठीक जोठी आपंकर 25 किलोमीटर पड़िबो टुवर्ड्स केन्दुझर रु आपंकर कलिकता रास्ता रे एनएच उपरे पड़िबो से गाँटी होउची ता गाँ ना होउची से गाँ ना होउची चेमणा एवं से चेमणार बासिंदा निर्मल महांत आम गाँ रु विभाग करिसथि मो गाँ रु केन्दुझर जिलार मो गाँ रायकला रु से मो भेणी हेबे से सेठी तैयारी करले रेडियो स्टेशन। कटक जो रेडियो स्टेशन तैयारी हेची तार अनुरूप तैयारी करले एवं निज से गाँ रु से टेस्टिंग करला परे सेठू से सही रेडियो स्टेशन रु से कहिले कहवा आरंभ करले आकाशवाणी चेमणा कहिले ताको गाँ होची चेमणा। आश्चर्यर कथा निजे ताकू निजे करले सब तैयारी करिके एवं कटक रेडियो स्टेशन रे जो प्रोग्राम बाजुला से प्रोग्राम बंद हो गला। आकाशवाणी चेमणा एटा होची रिफ्लेक्ट हैला कटक रेडियो स्टेशन रे एवं कटक रेडियो स्टेशन रे रिफ्लेक्ट हैला परे सेटा सबु रेडियो रे जेते एरिया फ्रिक्वेंसी भितर बाजिला आकाशवाणी चेमणा से करिके देखिले जे जने साधारण मेकानिक पिला ये सोच अछि आम लोक मानकर भितरे भी केवल अपॉर्चुनिटी तांको पाखको आसीबार बाकी कोठी ना कोठी अछि सेहि पई होय तो आम पिला माने आगु को जीवा पई प्रतिबंधक ताकू तैयारी होतला। आज आम सरकार आसिला परे मोदी जी आसिला परे डबल इंजन सरकार आसिला परे आज सुजोग आम आज देवा पई जाउछंती। आ गोटे पिला कथा कहउतिले जने मोटरसाइकेल मेकानिक से केन्दुझर घटगा जो माँ तारिणी पीठ अच्छी सेठिकार पिला ता गाँ घटगा लगी ऊपर रिहा तार ना हूँ चांद भाई अली अरसाद जने मुस्लिम पिला तार बयस भाव 60 वर्ष हाँपाई जाऊँ 20 वर्ष पूर्व से मध्य गोटे मोटरसाइकेल रे से ता ऊपर फैन लगे देले एवं सेटा मोटरसाइकेल सेटा होची तापर ऊपर को उठिबो एवं उड़िबो से एरोप्लेन भरिया एवं तापर पुणी उल्लेबो हेलिकॉप्टर बनैले फैन लगे देले एवं से 100 फुट ऊपर को पर्यंत उठिले एवं मूव करले पुणी आउथरे से ओल्हेले ओल्हेला बळे जस्ट टिके हल्का भाबरे ओल्हेले सक्सेसफुली हेले गुड़ टिके खंडिया हला किंतु से सक्सेसफुल इतरे साधारण जने मोटरसाइकेल मेकानिक ये प्रकार चिंताधारा निजे करिबा एवं रेकर्ड करिया एमती अनेक पिला अछंती केवल सुजोग अपेक्षा रे ताकू जदि सुजोग सरकार दे परिबे सेति पई मनोज आहुजा सीएस कहउतिले पीपल्स हैज आइडियाज किंतु आमे समानकु से आइडिया को किबळी भाबरे से अर्थात संकल्प को सिद्धि प्राप्त केमती हेई पारिबो सेति पई आमे टिके तांकु सहायता करिदेले अनेक युवक युवती अछंती जो माने करि पारिबे एठी अनेक छात्र छात्री अछंती आत्मविश्वास अछि अछि जो माने अछंती हमर छात्र छात्री हैं कॉन्फिडेंस अछि ना आमे किछि नुवा करि परिबा हैं जोर से टिके कहंतु यस आई कैन यस आई कैन धन्यवाद निश्चित भाव रे ए सुजोग रे आज बहुत बड़ गोटे सुजोग आमको आसी पारिछि एवं सेथि पई आमे साधारणतर भाव रे आज ओडिया पिलांको ये क्षेत्र में प्राथमिकता देवा आम सरकार रो जो प्राथमिकता अच्छी आज ताहा मध्य आमे करि पारिछु
आम सरकार निश्चित करथिले जे आगामी 5 वर्ष भितर जदि आम दल सरकार को आसीबो ताहले आमे 1.5 लाख पिलांकु सरकारी चाकरी देबु एवं ए पर्यंत आमे पाखा पाखी 28,340 जन को नियुक्ति आमे दे सारी छु। आज आफ्टरनून रे आउ घंटे पर प्रोग्राम अछि आउ गोटिए हमर नियुक्ति मेला अछि सेथिरे मध्य आमे पाखा पाखी 1686 जन को नियुक्ति देवा पय जाउछु आ घंटिए पर सरकारी नियुक्ति चाकरी एठी प्राइवेट सेक्टर रे शिल्पायन कारण रु आमे नियुक्ति आमे आमे दउछु आज भीतर आज जो आमर कंपनी माने आछन्ते सामाने आज दउछन्ते 77,000 आज एवं पूर्व जेते हेइतिला 77,894 जन को नियुक्ति प्रदान करा जाउछि जाइछि सेथिरु 56,559 जन ओडिया अछन्ति ये 77,894 एवं एटा प्राइवेट स्तर रे जॉब देइछु एम्प्लॉयमेंट करिछु एवं सरकारी स्तर रे 30,032 या को मिसेले 1,07,926 जन को आमे ये 15 मास भीतर समान को आमे एम्प्लॉयमेंट करिछु बोथ गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर रे गोटिए वर्ष भीतर ये निश्चित भाव रे आम ओडिशा पई बहुत बड़ा गोटिए नियुक्ति क्षेत्र रे जो भरोसा नथिला आमे चाकरी पाइबो पाठ पढ़िबो आ चाकरी सुनिश्चित हबो आज लक्षे जन चाकरी पाइले ओडिशा रे ये लक्षे जन भीतर पाखा पाखी 80,000 रु अधिक ओडिया युवक युवती ये सुनिश्चित आज आम सरकार आज आपण मान पाखे रखी देखई समय आसुची आगामी दिन में आम आहरी आग को जापरू एवं से आज मोदी जी आमको आह्वान देइछंती स्वदेशी उपरे अर्थात आमर एठी आम प्रोडक्ट करिबा आमर कंपनी माने एठी प्रोडक्ट करिवे आमे ताकू व्यवहार करिबा आत्मनिर्भर भारत ये जो बहुत बड़ा आज आह्वान देइछंती आत्मनिर्भर भारत गठन दिगरे ओडिशा मध्य से दिगरे आगौछि एवं सारा विश्वर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन रे एबे एक प्रभावशाली भाव रे जो परिवर्तन देखा देइछि सेतिरे ओडिशा आज शामिल हेछि आउ सेति पई आज ओडिशा भारत रे एक आकर्षणीय क्षेत्र भावे आज निजको प्रतिष्ठा करि पारिछि मेक इन इंडिया रो सफलता रे ओडिशा एही शिल्पायनर पदक्षेप एक आज बहुत मूल्य आज योगदान आज रखा जाऊँगी आ समृद्ध ओडिशा 2036 आमर जो उद्यम जारी रही देशर अर्थनैतिक प्रगति क्षेत्र में एक निश्चित भाव में हलमार्क हम आम ओडिशा खूब शीघ्र एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा जाऊँगी ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो होगापी जाऊँगी से आज हूँ जो ग्राउंड ब्रेकिंग है ये है फोर्थ ये चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्सव अवसर रे आज आप माने जेभली भाव रे प्रत्येक शिल्प आ समृद्धि पथरे आप माने समते दृश्यमान होती एवं कार्यक्रम करुछंती ओडिशार अभिवृद्धि आज जेभली भाव रे बढ़िया पाई लागिछि आगामी दिन में निश्चित भाव रे ओडिशा शिल्पायन अभियान क्षेत्र में एक नुआ इतिहास लिखिब समृद्धिर सुवर्ण इतिहास आज यही कार्यक्रम अवसर रे मु आपण मानकर सहयोग पाई समस्त को धन्यवाद दूची आसंतु आम समस्त एकत्र होई एक समृद्ध और विकसित ओडिशा गठन पाई आमर अभियान को जारी रखिबा और मोदी जी संकल्पर विकसित भारत 2047 को सिद्धि रे परिणत करिबारे योगदान देवा वंदे उत्कल जननी धन्यवाद।
प्रगति के रथ पर विजय के पथ पर चल रहा है देश मेरा, बुलंद भारत का एक सुनहरा सपना देख रहा है देश मेरा, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम हमारे उड़ीसा के संग। वर्तमान कार्यक्रम रे समय आसी जाइए आनुष्ठानिक भाव परिसमाप्त करवा। मो अनुरोध करने को चाहिए कमिश्नर कम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इपिकॉल श्री भूपिंदर सिंह पुनिया महोदय धन्यवाद अर्पण करेंगे। Thank you. Good afternoon, all. I think we are a bit delayed. That's why there is some. I will request my student friends to be there for 2 minutes. तो आज ये शुभ कार्यक्रम रे आमर जो ग्राउंड ब्रेकिंग आउ जो एम्प्लॉयमेंट विषय रे कथा हेले मो समस्तों को कहे भी जे आमर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी कही सारी चंती जे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पई आम समस्त को गोटे टीम हिसाब रे काम करिबो पड़िबो जो गवर्नमेंट गोटे टीम अच्छी आपना माने अभी हमरो एसीओ सर जेमती कहले जे सबु डिपार्टमेंट जो माने इंडस्ट्री रु संपर्क अछंती आज एठी अछंती से आमे टीम हिसाब रे काम करूछु। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से गोटे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एनी अदर डिपार्टमेंट नहीं पूरा गवर्नमेंट जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस केमिति आउ ताको हम बढ़ाई परिबा से हिसाब रे हमको आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिग्दर्शन देइचंती ता संगे संगे जोटा एम्प्लॉयमेंट कथा उठुची तो ऑन बिहाफ ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑलरेडी मेंशन दैट we have to train ourselves, we have to upskill ourselves as per the requirement of the industry, and today so many industry friends are present in this hall, so I will request them as and when they require they can talk to us, they can tell their requirements, they can tell their skill sets, whatever is required on behalf of government of Odisha, the Department of Skill Development, Technical Education. I assure you that our kids will do wonders. You just let us know. So with that, on behalf of the government of Odisha and Industries Department, I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Minister for his visionary leadership guidance that continues to inspire Odisha's journey for industrial transformation. I also thank Honorable Minister of Industries and Skill Development for his constant encouragement, commitment to strengthen our industrial and human capital landscape. I sincerely acknowledge the presence of our esteemed industry partners on the dais, SRF Limited, Epsilon Steel, Bajrang Steel, Greenply, and of the dais and the star employers. Your commitment, your participation, your patience shows that we are a good team and we will take Odisha ahead in this direction under the visionary leadership of Honorable Prime Minister and our Honorable Chief Minister. My sincere thanks also goes to respected Chief Secretary, DC Ma'am, ACS Industries, and all my respected seniors and colleagues from the different departments. Without their insight and guidance, this program would have almost impossible. So thank you for your guidance and support. I also thank all the district teams, esteemed members and invitees, honorable MLAs, those who have joined virtually for their kind presence, gracious presence, and sparing time with us and encouraging industries at the ground so they will feel more confident, and in future there will be much more investment. Finally, I thank all distinguished guests, media friends, officials, all stakeholders for their participation and support. It is the collective commitment that ensures that Odisha continues its path for inclusive and sustainable industrial growth. We will be part of the Viksit Bharat and Samruddh Odisha. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद पुणी थरी मंचासन अतिथिगण मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा आम सहित बहुमूल्य समय देथिबा समस्त दर्शक मान को अनुरोध करी आपण समस्त खाइबार प्रबंधन करा जायछि।
आम सहित योगदान कर आज कार्यक्रम को साफल्य मंडित कर अंतर धन्यवाद दौर मुनमुन सिंह आज कार्यक्रम को ये रखुच्छी। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी।